आप अपनी नीड्स नहीं बताओगे तो किसी सामने वाले को कैसे पता चलेगा? सेल्फ कहूंगी, सोल कहूंगी, इनसाइड द डिवाइन दैट यू हैव, गेट इन टच विद दैट. दे कम एंड डू व्हाटएवर दे फील लाइक. दे लाइक हम राजा हैं यहाँ के. आई थिंक पॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बच्चों को EQ क्लासेस में भी यही सिखाते हैं कि गुस्सा आ रहा है तो 10 सेकंड काउंट करो, 10 सेकंड्स काउंट करो. हम ना अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते. Right now, if we are recording this podcast too, with practice, what will happen? Those 5 seconds will get reduced to 1 second. What are some key elements of a healthy and conscious relationship? The only thing that stood our relationship was the trust and the communication. As you grow, relationship भी grow होता है. Yeah. Same तो नहीं रहता. And because you are also changing. आप 5 साल पहले कैसे थे, आज अलग हो. आजकल टेक्स्ट पे ब्रेकअप्स हो जाते हैं. हमारे टाइम में तो हम लेटर लिखते थे. खुशी is not the goal. The goal is to enjoy life. Emotional intelligence is not about regulating our emotions. Once you understand others' emotions, you'll automatically regulate your emotions. Yes. It's all about how you want to apply that intelligence. We are revolving around those expectations, that what that power is giving us. Yeah. Right? People say you should not expect. Yeah. But I also feel that expectations are also required. I have a different view that अगर हम balance में ही रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? We stop victimizing ourselves. Yeah. Or stop blaming others for everything happening in your own life. Healthy relationship, I feel, is that space where you create your life. Like create your environment, basically. Create your environment. What exactly one advice which you want to give for all the women out there who are making significant career changes, or they're entering into new phases of their lives, such as motherhood, or they're getting married, or kahin college mein admission ho raha hai, whatever is happening, right? Husband ka transfer ho raha hai. Anything can happen because women to piche chal jati hai, right? That's expected out of them. Nobody thinks about their career role, and I'm sure this would get resonated with many of the women out there. So I would like to know from you, like how one can stay resilient and adaptable during all these major life transitions which happens with everyone. I think majority of the women faces this issue, so I would like you to address this particular thing too. Hello everyone. Hello Madhulika, how are you? Hi Avinash. It's been a great thing that we connected for a podcast. And just to introduce Madhulika, she's having a 9+ years of experience as practicing lawyer, and she has been a protagonist of self growth, and which has always helped her to become a relationship coach and a consciousness coach as well, if I may correct it, right? So what Madhulika is doing, she is dedicated to empowering women to thrive in their relationships, motherhood, and each of the career transitions, because as women, nobody understands the pain of a woman, right? Everybody concentrates on male takes care of the responsibilities and woman doesn't, right? Woman takes care of the home responsibility, but it's difficult to understand in the society that we both are equal, everybody's equal. So as a relationship coach, Madhulika specializes in empowering women during their lives most transformative challenges which people face in their lives, and she's passionate about guiding through the complexities of the relationship issues which everybody goes through, the motherhood and the career transitions as well. So with 2+ years of experience in the she is a certified accredited life coach, specializing in relationship and consciousness coaching, and she provides personalized coaching that helps women cultivate confidence, clarity, and resilience in today's competitive market, right? And I'll start the podcast with a simple question, Madhulika. I know we're talking about balancing relationships, balancing our career, balancing our personal growth for our inner harmony and emotional wellness, right?
And this is the reason why like we collaborated and we came for this podcast, right? Now the question, the first question which I want to ask you, with your intro, obviously I introduced you, but I want to know from you what exactly you do, and can you share a bit something about your personal journey and what actually inspired you to become a relationship and consciousness coach? All right. Thank you, Avinash, for such a lovely introduction. Thank you so much. So my personal journey started quite young. I think जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ तो मेरे को यही याद आता है कि जब मैं स्कूल में थी Mm-hmm. तब से देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस इन माय माइंड कि यार मेरी लाइफ में तो मैं अभी ये महसूस कर रही हूँ लेकिन वो अपनी लाइफ में क्या महसूस कर रहा है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते थे आई वाज एज अ पर्सन आई वाज वेरी ऑब्जर्वेंट अवेयर ओके हाउ एम आई फीलिंग अपने इमोशन से काफी सेंसिटिव थी कह सकती हूँ वेरी इमोशनल जो आजकल लोग कहते हैं कि बहुत इमोशनल है सेंसिटिव है जरा जरा सी बात पे गुस्सा करती है पर मैंने अपने आप को देखना शुरू किया अवेयर हुई फिर थोड़े थोड़े कोर्सेज किए इधर उधर तो समझ में आया कि यार अच्छा हु यू आर रियली सो दैट्स हाउ इट इज बीन लाइक एंड मेरे लिए आई थिंक relationship is the holds the most important value and that is why I think मैं coaching life coach तो बन गई there are so many avenues as a life coach also executive coaching other types of coaching leaderships but I was more inclined to relationships because that is something that's my forte I understand relations very well people very well in fact like how and from where they're coming from and always trying to find solutions and consciousness is very close because again something beyond the mind जब वो questions उठते हैं आपके curiosity होती है आप you're inquisitive what is behind this mind और हम काफी spirituality की तरफ भी जाते हैं समझते हैं कि ये क्या है हमारे scriptures में क्या लिखा हुआ है So yeah, that's why I think I've done a few courses, understood. गीता भी पढ़नी शुरू करी थी, कर रहे हैं. पर it's just a journey. Lifetime लग जाएगा, समझते समझते अपने आप को. So that's how it's close to me. Okay, like a short and sweet answer which you gave. It's all about observing more, and it's all about clarity. It's all about self-awareness, right? So once people realize this thing, they gain that power, that emotional question which we talk about, emotional intelligence which we talk about, and it comes from self-reflection. And the second question which I have, like, how do you diverse your roles as a lawyer too, as an energy facilitator too, and as a educator of emotional quotient, and influence your approach towards coaching? So this is one thing which I want to know, because people who are coming in the life coaching industry, they have gone through a lot. I'm telling you, they have gone through a lot. I'm sure you would relate it, and this is the reason why they're coming in the life coaching, because they don't want that anybody else should go through that journey. It's all about a journey. Nobody reaches a particular destination. But I want to know from you, how do you diversify your roles, and how it's helping you in building your coaching journey? Okay. So as a lawyer, I think आप people से deal करना सीखते हो. Yeah. You meet a lot of people, different kinds of people, all sets. कहीं ना कहीं as a lawyer, हमें ना we find solutions find करने हैं client के लिए. Yeah. Law is law. हमें पता है कि हमारा client कहाँ stand करता है. पर हमें उसको कुछ ना कुछ तो दिलाना है. Something that तो हम लोग कहीं ना कहीं we try to find solutions in the worst cases also. Similarly, I think in coaching, what we really do is we partner with the client कि उनके लिए बेस्ट क्या है सिचुएशन में क्योंकि सबका सोल्यूशन एक नहीं है वी हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस डिफरेंट वेज कि वो अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं तो लॉयर एज अ लॉयर्स पर्सपेक्टिव आल्सो आई फील दैट आई डील विद अ लॉट ऑफ women and women are not aware of their own rights their कि उनमें
एक इक्वालिटी होती है ना, तो Correct. इक्वालिटी एज अ लॉयर आई हैव इन माय माइंड कि हाँ डेमोक्रेसी है, सॉवरेनिटी है, बट फॉर वुमेन देयर डीप कंडीशनिंग ऐसी है कि वो अपने आप को एक नीचे पेडेस्टल पे ही मानते हैं, दे आर नॉट एबल टू इवन एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो वहां पे काम करती हूँ, तो मैं लॉयर के नजरिए से काफी देखती हूँ उन्हें, और थोड़ी मोटिवेशन भी देने की कोशिश करती हूँ। तो वहां पे बहुत हेल्प करता है एज अ लॉयर। एंड एजुकेशन वाइज आई डोंट वांट टू बी अ टीचर, मुझे टीचिंग अच्छा नहीं लगता, बट विद किड्स आई लव किड्स। एंड इमोशनल क्वोशंट आई रियलाइज दैट इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हमें अगर बचपन में मिला होता तो हम शायद कहीं और ही होते। सो आई एम ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस विद किड्स। एंड मैं अपने बच्चे को भी अपने माय सन इज नाउ 4 years old, एंड जब से वो हुआ है तब से आई हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ उसके साथ साथ, बिकॉज मैं अपने एंगर को अगर मैनेज कर पाऊंगी तो ही तो मैं सामने वाले को सिखा पाऊंगी। Correct. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जर्नी। सो Okay. So, yeah. no, no, go ahead, go ahead. Complete it because I want to know from you only. Because you are a relationship coach, you are a Hmm. consciousness coach, and you're a lawyer too. You understand people the way it needs to be as per law too. The equality which you mentioned. Hmm. And it's so difficult to understand in the society because of the deep seeding which has been done through generations. It's not our fault. It's nobody's fault, but Please. if somebody is coming up with a solution, people should embrace it. That's what my take is, Hmm. because everybody's journey is unique. That's what you mentioned, right? And this is the reason why law is equal to all, but everybody does their deeds like separately, right? But Yes. it's equal for all. Yes. And same is the universal laws of the nature as well. Hmm. It works equally for all. Absolutely. I think everything works in a synchronicity, and universal होते हैं reactions भी, responses भी काफी, and that's the way our consciousness works, the mass consciousness. So if you're not that aware of your surroundings, of yourself, तो हम जो mass consciousness सोचती है हम वही चीजें खींचते हैं, as we are all energy beings, हम में सब में energy है, we attract a lot of things. Correct. So कहीं ना कहीं हम वही सोसाइटी के बिलीव्स और वैल्यूज लेके चलते हैं, वी डोंट अप्लाई आवर ओन और इवन क्वेश्चन इट, दैट इज इट रियली वर्थ इट, इज इट नेसेसरी टू स्टिल फॉलो देम। तो वो क्वेश्चंस उठते हैं, एंड आई थिंक एज माय स्किल सेट मुझे लगता है कि इतने सालों लॉ पढ़ी हुई है, आई हैव गिवन judicial exams also, and didn't get through the interview, crossed the pre's and mains and didn't get through the interview. That was a turning point for me. I mean, that was a realization. I realized that मैं जिस चीज के पीछे भाग रही हूँ, this was not my goal. This is my parents' goal. They want me to become something, but I am not aligned with it. तो मेरा हो ही नहीं रहा. मतलब for years I could not clear any exam. But 1 year I decided that, मैं अपने आप को डाउट बहुत करती थी, तो जब मैं डाउट ओवरकम किया तब जाके मेरे ऐसे एग्जाम्स क्लियर हो गए. I mean, the same amount of dedication and same amount of hours of studies and everything, but mindset, जहाँ mindset change हुआ वहाँ क्लियर हो गए. But उस mindset से clarity भी मिली कि what is exactly that you are looking for. Yeah. So when you're aligned to help people and do service to people in a different way, वहाँ मैं गवर्नमेंट जॉब में एज अ जज बन के भी शायद खुश नहीं रहती. वो रिफ्लेक्शन बाद में आया, बट आया, एंड दैट लेड मी टू कोचिंग एज वेल. Wow. It's a beautiful journey, I would say, Madhulika, because see, बहुत कम होते हैं जो ये decisions भी ले पाते हैं, because 90% जनता, it's all about rat race. वो कर रहा है तो अपन भी ये कर लें, right? And that's what we call that as seeding, right? That's a seeds which has been implanted in us.
Now it depends on us what we need to do with those seeds, because we can't cut those seeds, we can't remove those seeds, we can just ignore those seeds and concentrate on positive ones, Yes. which gives abundance to us. Hmm. So that's a very good approach which you mentioned. The second question which is there, which comes to my mind always, that what are these because I see that day in and day out, right? Hmm. In my family, everyone is a housewife, right? Hmm. So there's a different mindset which goes into their mind as well, into our minds as well, because I want them to be open, right? Open for the opportunities which are there for their life, because life is one, right? We need to live everything with passion in this life only. Nobody is giving us the second opportunity. If Hmm. you are lucky enough that you've got this opportunity, that for example, like you, how you shifted, even I shifted like this, post a corporate journey, and then basis that I started this life coaching too. Now, the second question which comes, which I was coming to, like, what are the some common challenges which women faces when trying to balance their relationships to motherhood, to their career changes to, and because see, for a woman, it's two families, right, which they need to take care of. For a man, it's just one family in consideration to their personal needs and their professional requirement which they want for their personal growth. So it's all about, I want to know from you that, like, what are some common challenges, and share some strategies which you recommend to managing these challenges while maintaining a sense of confidence too in those women, because that's Hmm. required in today's world. Got that. Got that. Thank you for bringing that up. As women, I think we face challenges in every uh, stage of our life. Like getting married is one thing, completely different culture or yes, family आप shift कर रहे हैं. Actually, मैंने देखा है that since the society is the same, the concepts are same, people still view marriage in a similar manner. लेकिन individuals बदल गए हैं. Girls are also doing something, working somewhere else, in some office, corporate job, कुछ तो कर ही रही हैं. तो Yeah. माइंडसेट डिफरेंट हो गया है थोड़ा सा. इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, Correct. लेडीज. बट लेकिन जितनी पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो तो सेम ही है. वहां माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है. आज भी भले योर इफ अ डॉटर इज वर्किंग, बट अगर डॉटर इन लॉ आएगी तो शायद उसको मना कर दे काम करने के लिए कि नहीं, क्या जरूरत है. क्वेश्चन द लैंग्वेज इज क्या जरूरत है. एक्चुअली जरूरत नहीं है, ठीक है, आपकी फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे हो, बट इट्स नॉट द नीड ऑफ मनी. द नीड इज ऑफ यूजिंग योर पोटेंशियल स्किल सेट. पढ़ाई करिए इतनी तो यार कहीं तो यूज करें उसे. एंड आई फील दैट अगर आप अपने माइंड को नहीं यूज करते हो अपने स्किल सेट के लिए, क्रिएटिविटी नहीं एक्सप्रेस हो पाती है, then the mind becomes dull, frustrated, angry. और वो सारा एनर्जी जो है घर में ट्रांसफर होता है बच्चों पे, हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ, लड़ाइयाँ, हर चीज पे यू गेट सो इरिटेटेड दैट मूड स्विंग्स, एवरीथिंग चेंजेस. Balancing all these things is very difficult. I mean, listening to certain taunts by people, statements by people, and still going through everything. Hats off to every woman who's working full time, 9 to 5. घर आके काम भी करने. हमारी सोसाइटी में एकदम डिस्प्रोपोर्शनेट केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. So maximum women I feel who I've seen are struggling with this area where they're doing everything at home and at work. Everywhere they are expected to perform well. काम में भी और यहाँ घर पे भी. घर पे भी आप मैनेज करो ढंग से. Big families who are financially well off, they don't want the daughter-in-law to do anything. एंड उनको प्रॉब्लम है कि भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. दे फील कि वो
expressive हो जाएगी, she can do whatever she wants to. It's a controlling thing that you want to control the other person. So this is a mindset that, and a very complex mindset that women have to deal with. And जहाँ पे वहाँ उनका husband supportive नहीं होते हैं, तो बहुत they feel lonely. Sometimes not even their own parents support because their mindset is also the same. Yeah. And they're like, compromise. Everywhere we compromise, we are left with nothing. We are asked to take care of the children. आप 45-50 years के हो जाओगे, बच्चे बड़े हो गए हैं, आपकी जरूरत नहीं है उन्हें, तब क्या करेंगे? A lot of women I'm meeting are facing this issue कि हम क्या करें, हम बहुत बोर हो रहे हैं, क्या करें? So ये काफी women have to face a lot and lots of challenges in every stages. चाहे वो शादी किया हुआ हो या करियर ब्रेक में हो. करियर ब्रेक में तो अलग होता है कि सेल्फ डाउट भी होता है, आइडेंटिटी लोग लूज हो जाती है. आप बॉडी के लिए बॉडी वेट बढ़ गया है तो यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर ओन सेल्फ, एक्सेप्टेंस नहीं है. एंड कहीं ना कहीं हमारा इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत हो जाता है विद द चाइल्ड. Somewhere you become so controlling, you can't leave them or trust anyone else. As a mother, you will not trust your own husband also to take care of your child. कि हाँ ये ठीक नहीं रख पाएगा वो, तो छोड़ के ही नहीं जाएंगी. कईयों के साथ उल्टा है, उनको कोई मतलब नहीं है बच्चा कुछ करे. So many things. Everybody is managing their lives, I think. Just managing it to the line कि यहाँ होगा, उससे थोड़ा सा और पुश हो जाएगा तो दे विल गो एक्सप्लोर, और थोड़ा कम हो जाएगा तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे. Exactly. Borderline पे. Borderline पे. I think they're liking that. I think this is the westernization. People use westernization as a bad word. For me, westernization is development. We are seeing other cultures, so at least we are able to evolve our mindset. Right, the things which had been taught to us in our Indian culture, it's good for the development, for the ethical, for the family, for everything, right? But now the world is changing too, right? We need to change according to the world. We need to change according to the time. What has been done in the past doesn't make sense that it will be done in the future too, right? It will be done in the present too. And that's what makes our journey. But the second part of this question was like, how do people come out of these challenges? Because I know challenges are many. बहुत लोग कुछ भी, जैसे मैंने भी अपनी corporate life के अंदर बहुत women's को ऐसा देखा है, they struggle, that career break which you said, like it happens, it keeps on happening. And the family pressure, right, कि काम भी करना है and family का भी pressure है, उधर से पूरा husband का भी pressure है. Nobody understands their problems, right? And that has always helped me evolve myself as a man of the society. Because जब आप ये चीजें देखते हो ना अपने आसपास, तो एटलीस्ट उनको फील करना स्टार्ट करो. सो सारे मेंस को मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि हमेशा फील करो व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, बिकॉज उनके सेक्रीफाइसेस से आपकी लाइफ बन रही है शायद. हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने. Absolutely. वो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए मधुलिका जी, लाइक व्हाट ऑल लाइक पीपल कैन डू, राइट? let you know answer that. I think what exactly one advice which you want to give for all the women out there who are making significant career changes, or they're entering into new phases of their lives, such as motherhood, or they're getting married, or कहीं college में admission हो रहा है, whatever is happening, right? Husband का transfer हो रहा है, anything can happen, because women तो पीछे चल जाती है, right? That's expected out of them. Nobody thinks about their career role, and I'm sure this would get resonated with many of the women out there. So I would like to know from you, like how one can stay resilient and adaptable during all these major life transitions which happens with everyone. I think
majority of the women faces this issue, so I would like you to address this particular thing. A lot of women these days are choosing to go back to work and managing their life with other facilities, जैसे डे केयर है आजकल इंडिया Yeah. में थोड़ा सा बेटर हो गया ये सिस्टम. मेड्स हैं, इन लॉज के साथ आप रहते हैं तो वो ध्यान रख लेते हैं. तो एक तो ये होता है कि मदर्स चाहे 6 महीने या 1 साल whatever time they have with for themselves उतना टाइम स्पेंड किया और आगे बढ़े. कई लोग नहीं छोड़ और कई लोग छोड़ देते हैं. there are data which shows that I think more than 50% of the women do not join back the force after having a baby. Yeah. So because इनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, चाहे फाइनेंशियल हो या फैमिली का हो. But strategy, I think they're trying their best to be independent. At least these days, jo I'm seeing ladies are trying to be more independent, are aware also. Uh, uh, कोई ना कोई योगा या मेडिटेशन कुछ कर रहे हैं. But majority of the ladies do not have that also. तो उनका ध्यान कहाँ जाता है? तो उनका ध्यान जाता है कि यार लेट्स गो आउट, डू समथिंग, कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ या मंदिर चले गए, जो रिलीजियस हैं वो मंदिर चले गए, कहीं ना कहीं अपने मन को शांत करने के लिए जो चीज उनको मिलती है वो कर लेते हैं. बट रूट कॉज पे कोई नहीं काम करता. रूट कॉज है कि आप ये हो ही क्यों रहा है और क्या चाहिए आपको. और कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं हमारे बहुत. सो हमें नहीं पता है, वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है. कई बार आपको नहीं पता आप क्या कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो दिमाग में अज्यूम हो जाता है कि हाँ बोल दिया. बट मैक्सिमम टाइम I think we should work on their communication with their husband, with their parents, in-laws, because I found that communication say, not just say whatever it comes to your mind, but politely have a conversation with everyone. Tell them what you really feel. आप अपनी needs नहीं बताओगे तो किसी सामने वाले को क्यों कैसे पता चलेगा? वो तो assume करके चल रहे हैं कि नहीं होगी, पता ही नहीं, उनकी भी तो awareness में कुछ नहीं है. Correct. हम ये सोचते नहीं है कि सामने वाला इतना नहीं सोचता. सब अपने बारे में ही सोचते हैं ना, कोई किसी के लिए नहीं सोचता है. सो वी हैव टू थिंक एंड कम्युनिकेट. आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. एंड प्रायोरिटाइज आवरसेल्फ आल्सो. एज अ वुमेन वी हैव ओनली लर्नड एंड कंडीशन्ड टू बी सेल्फलेस. स्पेशली माँ बनने के बाद तो सब आप दूसरों के लिए करो, अपने बच्चे के लिए करो. बच्चे के लिए इतना हम पागल हो जाते हैं कि we do forget ourselves. So somewhere we have to get in touch with that self जो है हमारा personal self कहूँगी, soul कहूँगी, inside the divine that you have. Get in touch with that and then make a choice what you want to do. I'm not saying that you should go back to work or you should just take care of the children. It's a choice. आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको जरूरत है या नहीं है. So challenges overcome करने के लिए like what we need to do is self expression. कि पहले तो आप communicate अपनी feelings करना सीखिए, जो भी feelings हैं, because see बातचीत से ही हल निकलते हैं किसी भी चीज की. When we are talking, when we are expressing, universe के अंदर sound जा रहा है. We are producing those sounds and everything is vibration. That's a sound only, right? So in my frequencies world, so I teach vibrations, like how to control your vibrations, how to master your vibrations. Actually, you need to create your vibrations, that aura which we say, and basis that only you will create whatever you want to in your life actually, right? So जो भी self awareness की अपन self expression की आपने बात करी कि कम्युनिकेट करना सीखिए. अपना सेल्फ एक्सप्रेशन जब आएगा तो इमोशंस जब आपके अच्छे रहते हैं तो you'll feel happier, you'll feel lighter from inside. So it's a choice which you said that but self reflection करना जरूरी है that you want that choice or not. हाँ,
I think that reflection is required. Strategies तो ऐसी कोई full proof strategies नहीं है, but this is from what I've experienced. Yeah. That I So it's a think journey, it's a journey. day-to-day journey. There's no nothing a destiny that will see. It's like कि आज तो आपने आइंस्टाइन की जैसे काम कर लिया, राइट? कल को वो मेमोरी नहीं रही, फिर क्या करेंगे? राइट? सो it's all about the journey कि हाँ आप कब तक वो काम कर सकते हैं. बिल्कुल. That's how we evolve in life. Okay, so thank you so much for answering this question. I'm sure all the women who are watching out here, and even the men who are watching out here, they would understand that this is a serious, deep issue, which has been from generations, which has been passed on to us, right? But we are mature enough to understand everything, right? As a generation, we have seen a lot of generations. We have studied a lot. History में इतना सब कुछ हो चुका है. इतने लोगों ने अपने पे राज कर चुके हैं. इतने लोग अपने ऊपर मतलब सोच के देखो. We have been through multiple things. Now is the time. I think now is the time. जैसे वो लोग सोचते थे ना, now is the time. Freedom fighters. This is the time. We need to think like them. Otherwise, freedom of expression कभी नहीं आ पाएगा. True. Okay, so third question which I have from this part. So we have 3 sections, Madhulika ji, as I mentioned that. Yes. So this is the third question of the first section only. First section. Yeah. How does improving emotional intelligence help in managing our relationships and personal well-being? You mentioned about self-care, right? So how does emotional intelligence, which we are talking about, that how to gain that emotional intelligence, right? So can you provide some practical tips like for cultivating those emotional intelligence in our day-to-day lives, like for all the women out there, even for the men, because your message is actually going to the men's too, right? Because they need to understand, they need to provide that support system. It's women, obviously they have to give that self-reflection, but it's for the men, I would say. Yes. So I would like to know from you, like how inculcating those emotional intelligence habits in day-to-day lives, how we can do that. Actually, you're right. Emotional intelligence is required for both. And even in when men understand the women well, I think they can give a better environment for them to grow also. So emotional intelligence, बेसिकली आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं that it's required, important है. आजकल काफी researches भी निकल के आ रही हैं कि why is it important? It is important because it makes us make better choices in life, better decisions in life, handle relationships better, and everything is related. Everything has a relationship. Like मेरा time के साथ भी एक relationship. मेरा दूसरा इंसान तो है ही, उसके साथ रिलेशनशिप है कि मेरे रिलेशनशिप मेरा खुद के साथ भी है. सो एक रिलेशनशिप में इमोशंस भी आते हैं. करेक्ट. एंड यू अंडरस्टैंड इमोशंस can make you do anything. If you're extremely happy, extremely sad, decisions made in those times are not so great for you. So emotions अगर आपको impact कर रहे हैं तो हम उससे रिस्पॉन्स ना दे, रिएक्ट ना करें. सॉरी, बिकॉज रिएक्शन इज ऑलवेज नॉट वेल थॉट ऑफ. रिएक्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस. दैट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स. एंड हमारी रिस्पॉन्स तब आता है जब हम स्टार्ट करते हैं ये समझना कि अच्छा मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों, क्या इम्पैक्ट क्या है इसका. इम्पैक्ट ठीक है, समझ आया, बट एग्जैक्टली क्यों आ रहा है, मैं कौन सी अपनी एक बिहेवियर है जिसकी वजह से वो आ रहा है. दैट इज, इट मे बी समथिंग लाइक अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी. यू वांट टू डोमिनेट अदर पीपल. कई लोगों की होती है तो वो चिल्ला के बात करते हैं या गुस्सा करते हैं, एंड दे वांट टू बी हर्ड बाय एवरीवन. So anything can trigger them. So once we understand those things, triggers, तो हमारी रिलेशनशिप में बहुत फर्क आता है. बिकॉज हम रिस्पॉन्स करना डिफरेंट कर देते हैं, हमारा टोन अलग हो जाती है. जैसे ही वो टोन अलग होती है और
आप पोलाइट होते हो थोड़ा सा, people also see that, they react in a different manner. तो वहां पे एक स्पेस क्रिएट हो रही है कि हाँ यार, ये इससे अलग भी है, Correct. गुस्सा भी है, लेकिन कुछ और भी है इस इंसान में. सो दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग. एंड इमोशनल इंटेलिजेंस is so much required for a woman because बहुत इमोशनली चार्ज्ड होती है women. I think Yeah. we're all wired like that. Yeah. कि फेमिनिन एनर्जीज जो हैं एक फीमेल में क्योंकि ज्यादा होती हैं, तो देर मोर अटैच्ड टू दोस इमोशंस. सो इफ वी अंडरस्टैंड दैट बेटर, वी कैन एटलीस्ट ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन इन दैट मैनर. दे विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम अस. Correct. तो उसका एक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है. अगर एक वुमेन इज मोर इमोशनली इंटेलिजेंट इन द हाउस, I that house will have a different energy, a different aura, Yeah. because then वो रिस्पॉन्स भी वैसे ही देगी और अपने आसपास लोगों को भी बैलेंस में रखेगी. आई थिंक. और मेल्स जनरली दे हैव दिस थिंग दैट दे आर द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द हाउस, so they have a say in the house. Yeah. And they come and do whatever they feel like. They like, हम राजा हैं यहाँ के. तो that is आप राजा हो, मना नहीं कर रहा कोई भी, बट राजा का मतलब ये नहीं है कि आप सब पे सबको डोमिनेट करो या रानी को भूल जाओ. रानी को भी भूल जाओ. तो एक वो सपोर्ट सिस्टम बनाना. Yeah. और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का स्पेस क्रिएट करना, Yeah. दैट कम्स विद इमोशनल इंटेलिजेंस. Correct. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड. Makes sense. So what is the everyday tip which you would like to give to everyone that कि हाँ सपोर्ट सिस्टम बनना है सबका और इमोशनल इंटेलिजेंस गेन करनी है, स्लोली इसको ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने हैं, एंगर कब आ रहा है अपने को, सेल्फ डाउट कब आ रहा है, अपन सेल्फ एक्सप्रेशन कब नहीं कर पा रहे हैं, सो उन सारी फीलिंग्स को अपने को एनालाइज करना है और सबसे बात करनी है. इफ यू फील कि आपको किसी से प्रॉब्लम है, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम लग रही है वो, तब जाके आप बात करिए. अगर सामने वाले को लग रही है तो आप जाके पीछे मत पड़िए, बिकॉज वो फिर उल्टा भी पड़ जाता है. इट्स अ रिएक्शन विच यू आर क्रिएटिंग देन. राइट. नहीं, वहां पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर सामने वाले को कोई प्रॉब्लम है तो दैट्स हिज माइंड वर्किंग देयर. एग्जैक्टली. सो इफ ही इज वो परेशान है तो वो ही आके सामने से बात करे तो बेहतर है. करेक्ट. बिकॉज आप, दिस इज नॉट माई बिजनेस कि मैं उसको जाके ठीक करूं, बिकॉज हमारे में वो उतनी पोटेंशियल नहीं है. राइट. वो स्किल्स नहीं है कि हम पोलाइटली फीडबैक या क्रिटिसिज्म भी ले लें. Correct. है ना. और एज फार एज आपका क्वेश्चन जो कंसर्न है, वो मुझे ये लगता है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट होना. या. इमोशंस तो हैं, दिखते हैं, समझ आते हैं, बट स्टार्ट टेकिंग अ पॉज. आई थिंक पॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बच्चों को EQ क्लासेस में भी यही सिखाते हैं कि गुस्सा आ रहा है तो 10 सेकंड काउंट करो, 10 seconds काउंट करो. So that we make them do certain activities and that really helps them. Yeah. तो ये तो adults के लिए तो wonders ही होगा. अगर हम 10 सेकंड क्रॉस कर लें तो हमारे लेफ्ट ब्रेन will start working. The medulla oblongata will not have a impact on our emotions. कि जो past experiences है वो नहीं आएंगे फिर. Correct. तो first take a pause, and पॉज नहीं लिया जा रहा है तो सांस ही ले लो. वो तो करते ही हैं हम, 10 सेकंड नहीं गिन रखते तो सांस ले लो. सांस तो बहुत नेचुरल है, लंबी ले लो. Yeah. तो एक टाइम निकल जाता है उसमें. तो ये अपने क्लाइंट्स को भी मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आप सांस ले लो लंबी. इट विल हेल्प यू. और वहाँ आप एक डिफरेंस देख पाओगे कि मैं पहले कैसे रिएक्ट करती थी और अब कैसे कर रही हूँ. Correct. दोनों में डिफरेंस आ जाएगा अपने आप ही. एंड द सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट हम ना अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते. आई थिंक
खुद के एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी. दूसरों पे बिकॉज हम ब्लेम डालना बंद कर देंगे. हाँ, हाँ, ब्लेम डालना बंद कर देंगे. राइट. तो कंप्लेनिंग भी कम हो जाएगी, ब्लेम भी कम हो जाएगा, तो सामने वाला भी खुश रहेगा कि यार पूरे टाइम कुछ करेक्ट. सुनना नहीं पड़ता. करेक्ट. ये See, इससे I think most of the times emotions generate होते हैं expectations से, either from ourselves or from others or from the universe. So वो emotions वहीं से खेल रहे हैं. We need to control those expectations, balance those expectations. कि daily mindful, जैसे I coach on daily mindfulness. जैसे I work on emotional intelligence, but it's good to know that how deeply it's getting resonated with everyone. Because I'm feeling lucky about myself that yes, I got attached to this feeling, and it's actually surrounded throughout in the world too, with all the living beings. And it makes me happy from inside. If right now, if we are recording this podcast too, it makes me feel a happy soul that we are doing this. At least we are talking about it. Nobody's talking, like people are talking about it, but so everybody has their own way of expressing. It's our unique way of doing these things, that we are talking to the people out there, who are struggling to find that emotional intelligence. जो आपने बताया कि daily आपको practice करनी है ये चीजें, and daily के basis पे ही होगा सब कुछ, right? The हाँ, breathing, the pause which you mentioned, the 5 seconds or 10 seconds pause which you said, because I say that without knowing what the other person is trying to say, right. pause for 5 seconds. If you know what to say, go with a bang. It's fine. But if you don't know what to say, take a pause of 5 seconds. That will हाँ, improve our emotions, like the breathing. It will give us a space inside us to express and think about those emotions, what we need to say as well. absolutely, I agree with you. And with practice, what will happen? Those 5 seconds will get reduced to 1 second. With practice, it will reduce to Yeah, fractions, and you right. will gain that momentum in your life, that whatever you're saying, it's happening. Absolutely, It's actually. creating those vibrations inside you. So it's all about practicing everything. So thank you so much for taking this question up. Now, the another question which I have, Madhulika, it's like, what are some key elements of a healthy and conscious relationship? Because you are a consciousness coach, and you talk about like being conscious, right? Like the power is in the subconscious mind, but the actions would be done from the conscious mind only. Yeah. So I want to know, are there some key elements which everybody needs to take care of for a healthy and conscious relationship living, and like how like they can improve their communication skills as well to build those stronger and healthier relationship, because everybody wants happiness. People get married because of happiness. They want it to be happy, right? Nobody Hmm. wants that trouble in their life. Everybody wants to succeed in their lives, whether it's professional development or whether it's personal development, but it's all basis your personal growth only. When your True. personal growth is happening, your professional growth is automatically happening. You would feel that from inside. And I'm sure you would resonate to this question. So I would like you to answer this, and make sure that it goes deep to the audience, because this is a most important question for maintaining the healthy relationships around us. It's not only about husband wife, it's about every relation we're talking about. Right, of course. Relationship is not just couples, husband, wife, or partners, but it's more than that. Everyone is involved. You have a relationship with your father, brother, sister, mother. Sabka alag alag hai, right? For a relationship, a healthy and long lasting relationship, the most important, as we discussed earlier, Mhm. was is communication. Correct. Communication and how ट्रांसपेरेंट यू आर इन दैट रिलेशनशिप. उस पे ही लेवल डिसाइड होता है कि आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा. Correct. ट्रस्ट भी उससे आएगा. आप उस रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट भी उसी वे से करेंगे कि एंड ऑल्सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इन योर लाइफ. ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है. और क्लोज रिलेशनशिप्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे आर द पीपल हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू. Hmm. सो उस चीज को उसको आप मेंटेन करेंगे.
एक कॉन्शियस एफर्ट है हमारा। क्या है कि रिलेशनशिप में हमारे नोबडी टीचर्स अस कि कैसे निभानी है, करेक्ट। और निभानी भी क्यों है। अपने आप सीख जाओगे, ऐसे हाँ, बोलते हैं। हाँ, और सीख ही रहे हैं। आई थिंक हम लोग सीख ही या। रहे हैं इतने सालों से। फॉर मी, मैं अगर अपने हस्बैंड के रिलेशनशिप के साथ बात करूं तो वी had almost like it's completed 18 years. वाओ। We got married 8.5 years ago. उससे पहले we were in a long distance relationship. The only thing that stood our relationship was the trust and the communication. No matter what, we had a good communication. एक space थी कुछ भी बोलने की एक दूसरे से. So I think as you grow, relationship भी grow होता है. या। Same तो नहीं रहता. एंड बिकॉज यू आर ऑल्सो चेंजिंग। आप 5 साल पहले कैसे थे, आज अलग हो। आपके व्यूज अलग हैं, बिलीफ सिस्टम्स अलग हैं, चेंज हो जाते हैं। आप चेंज हो जाते हो, लेकिन आपको नहीं पता सामने वाला कैसा है। आपको तो लगता है सामने वाला यार 5 साल पहले था वैसा ही होगा, हैजंट चेंज्ड। बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं होती है, बीच में छूट जाती है। तो शादी हुए, यू गेट बिजी विद अदर थिंग्स एंड you have kids, so completely forget your relationship in that period, and it happens with most of the people. करेक्ट। So एक लॉन्ग लास्टिंग हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे के लिए टाइम निकालो। कुछ भी करो लेकिन टाइम निकालो। नॉट जस्ट रनिंग एरेंड्स की, घर का काम काज कितना है और उस हिसाब से वो तो हम डेली बात कर लेते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, ऐसे 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 ऐसे। कई लोगों के पास उतना भी नहीं होता, वो टेक्स्ट पे बातें होती हैं। या। और कॉर्पोरेट लाइफ। हाँ, हाँ, आजकल टेक्स्ट पे ब्रेकअप्स हो जाते हैं। हमारे आई नो। टाइम में तो हम लेटर लिखते थे। सो ट्रू। व्हाट्सएप्स नहीं थे, तब कुछ नहीं था, तो फोन पे बड़ी मुश्किल से ऐसे बात होती थी। तो यार आई थिंक दैट टाइम वी हैड अ डिफरेंट trust level. Now it's different. We have more insecurities and fears social media के चलते, and our wants and needs have increased. And as we grow, हमारे थोड़े mindsets different हो जाते हैं. But it's very important कि आप अपने पार्टनर के साथ इवॉल्व करो। सी, लड़ाइयाँ होंगी एंड इट्स इम्पोर्टेंट। एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू स्टेट वन थिंग दैट यू नो, आपने जैसे बोला हैप्पीनेस चाहिए सबको, किसी को भी नहीं चाहिए कि उसकी लाइफ में कुछ भी खराब हो। बट ऑनेस्टली हैप्पीनेस इज नॉट अ गोल। लेकिन हमें यही सिखाया जाता है, खुश तुम रहोगे, खुश रहोगे, खुश रहोगे, या आप move ahead in your life, have a kid, you'll be better off. Those are just, taking away all the issues and putting under the carpet. आप खुशी is not the goal. The goal is to enjoy life with your husband or wife. To have a good experience. The goal is to enjoy a good relationship with your parents, your in-laws. Or if you want to be in a nuclear family, have a good relationship with your own self. क्योंकि खुद के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो आपका आसपास भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। करेक्ट। यू विल बी मोर काम एंड एट पीस एंड मे बी मोर एम्पैथेटिक। Empathy is one thing which is required, like always. If you want to evolve in life, like empathy is required. And this is the first step of emotional intelligence. You need to understand other emotional intelligence is not about regulating our emotions. Once you understand others' emotions, you'll automatically regulate your emotions. Yes. So that's intelligence. Like for example, AI का जैसे अपन यूज में लेते हैं, चैट जीपीटी हो गया, इतने सारे टूल्स आ रहे हैं अब तो मार्केट के अंदर, बतेरे यूज में लो। इंटेलिजेंस आपको एक्चुअली में अच्छा ही देगी। इफ यू यूजिंग दोस टूल्स एज वेल, वो आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे, आपको बुरा रिजल्ट नहीं देंगे कभी भी। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वांट टू अप्लाई दैट इंटेलिजेंस. Yes. Like it's up to us, right? Once we gain that power, like daily we need to apply that or not, it's our choice.
Yeah. It depends on us how we want to shape up our emotional journey with our like people around us. Like it's Hmm. up to us. Even with the nature, I think we have a relationship with the nature too, right? Hmm. We have some responsibilities towards nature too, right? Because nature is seeing us. Like expectations to हर जगह ही होती है. That's what you said. Expectations to होगी. If the relationship is there, expectations would be there. But Hmm. I consider it like this: that sun is there, right? It's giving us light. It's giving us everything. We are all sun and the moons and the stars of this particular planet, and we are revolving around those expectations. That what that power is giving us, Yeah. right? So we need to revolve around our expectations. We should not grab those expectations. Like that's what my take is, that we should not be like overwhelming me, overexposing ourselves, that yes I want this, yes I want this. Obviously affirmations करने हैं, law of attraction करना है, manifestation, सारी चीजें करनी है आपको. But it's, you need to revolve around that, and you will find that path of like it's spiral which is coming in your world, and that will create the journey for you. Like it's a never ending spiral then. That's true. That's true. People say they know you should not expect, Yeah. but I also feel that expectations are also required Ah, so that you push yourself out of the comfort zone. correct. नहीं तो आप जैसे we try to find balance in everything. I have a different view that अगर हम balance में ही रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? Yeah, We'll be very comfortable in that state कि balance है अभी सब ठीक है. correct. But another theory, universal principle is that change is constant. Yeah, तो constantly change आएगा environment में, situations में, आपके belief system में, आपकी values में, तो clashes तो होंगे ही. correct. So I think, and through those clashes we learn. We learn something about ourselves. We learn something about our other person, and हम उसको कैसे rectify कर सकते हैं. Yeah, And where can we find joy? yeah, आई थिंक वो जॉय तब आता है जब हम एक माइंड में बहुत क्लैरिटी होती है अबाउट योर सेल्फ वी स्टॉप विक्टिमाइजिंग आवर सेल्फ yeah, और स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन योर ओन लाइफ yeah. सो relationship, healthy relationship, I feel, is that space where you create uh, your life, like आप Create your environment basically. create your environment. It's because Makes sense. Yeah, also a very important thing is that we allow people to treat us the way we want. correct. So आप क्या allow करना चाहते हो? How you want to be treated? Yeah, That's you are creating that. makes sense. Makes sense. No, it definitely makes sense, because it's only about like what we want from our lives, and that's a very good advice which you have given. So, like for a like what exactly one advice which you want to give for all the women out there who are making significant career changes, or they're entering into new phases of their lives, such as motherhood, or they're getting married, or कहीं college में admission हो रहा है, whatever Hmm. is happening, right? Husband का transfer हो रहा है, anything can happen, because women तो पीछे पीछे चल जाती है, right? That's expected out of them. Yeah. Nobody thinks about their career role, and I'm sure this would get resonated with many of the women out there. So I would like to know from you, like how one can stay resilient and adaptable during all these major life transitions which happens with everyone. I think majority of the women faces this issue, so I would like you to address this particular thing. I think जैसे आपने बोला adaptable और flexible कैसे रहें. I think women are more conditioned to be Yeah, very adaptable to situations. yeah, तो वो अपने आप को इम्पोर्टेंट ना मान के या प्रायोरिटाइज ना करके अपने काम को अपने हस्बैंड के काम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं कि ओके दैट इज़ बेटर देन yeah, वी लेट्स गो वी कैन डू दिस आई कैन चेंज माय करियर या कुछ और कर लेंगे या जैसे भी है आई एम नॉट श्योर
सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं. uh, आप एक्चुअली एज अ वुमेन हम अपनी सेल्फ वर्थ को एकदम गिरा देते हैं. स्किल्स आप भूल जाते हैं आपकी, कि आप क्या पोटेंशियल क्या है, स्किल्स क्या है आपकी. एंड सॉरी अविनाश, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था? सी एक्चुअली में क्वेश्चन ये था कि जो एडवाइस आप एक देना चाहेंगे सारी वुमेन्स को आउट देयर हु आर मेकिंग दो सिग्निफिकेंट करियर चेंजेस और एनीथिंग हैपनिंग द मेजर लाइफ ट्रांजिशंस व्हिच वुमेन्स गो थ्रू. I think it's everyday part of their lives, right? Managing that, finding that inner peace, I would say. Because as you mentioned, obviously it's not about the happiness because we can't be happy all the time. Let me be honest and blunt about it. We can't be happy all the time. We need that peace, actually. Yeah. So, how one can find that inner peace in themselves during all these transitions? Because see, people will hear this. People will know about everything once they get into those problems, right? Without those problems, they won't be able to actually resonate what we are talking itself, right? Okay. uh, so like during those transitions, what needs to be done, like for having that adaptable nature which you said that women are already adaptable, it's just that they need to be self-aware. Just take care of yourself and everything will get sorted. Yeah, absolutely. Like for mothers, women who are in this Yeah, transition, who are changing places or careers, और लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांजिशन आ गया है, तो आई थिंक व्हाट वी मोस्ट फियर इज द अनसर्टेनिटी. yeah, कैसे होगा, क्या करेंगे. फॉर अ मदर इट्स the feedback I'm getting and what I'm listening from other women are that they're not sure that कि वो अपने बच्चे को भी पाल पाएंगे कि नहीं. After having a kid, इतना उनको आत्मविश्वास ही नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है इतनी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. बिकॉज fear of uncertainty, fear of I don't know how will I do it, कि whether I have that skill also or not. So ये fear को बहुत ज्यादा fear में आके, या बहुत बहुत women डिप्रेशन में चले जाते हैं. yeah, That I don't know whether I'll be back in the shape I want to. I don't know if I'll be able to work or not. भूल जाती हैं कि उनकी क्या पोटेंशियल्स थी, स्किल्स क्या थे. और जहां आपको कोई कुछ कह देता है, जैसे किसी ने आपके घर वालों ने ही बोल दिया कि तुम क्या करोगी, तुम कैसे कर लोगी, yeah, बच्चा कौन संभालेगा, correct. या इन सब क्वेश्चंस को सुन के भी हम बहुत ज्यादा डाउट करने लग जाते हैं अपने आप को ही. But how to stay resilient, so how to develop that resilience Yeah, is to have a support system. I was देखो thinking आपको about the same. आपको अच्छा That see, find that support system. we have to have support system. Yeah, Support system not ki financial, but emotionally. You need to build a tribe of your own women, like-minded people, where कोई आपको सुन ले, आपको कोई ढंग से एडवाइस कर दे, या बस सुन भी ले. आधा काम वहीं ठीक हो जाता है कि कोई मेरा फ्रेंड मेरी बात सुन रहा है या समझ रहा है. They're able to relate to me. yeah, And अगर बहुत ही अच्छा रहेगा, if your husband is also part of it, at least he's listening, understands you, supports you, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कुछ करना. बिकॉज अकेले लड़की को ये लगता है कि यार मैं कैसे कर पाऊंगी, correct, है ना. तो correct. बिल्डिंग अ ट्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट.
I was lucky in my space where my husband was very supportive. Ki, no, you should go and work and do something. You've done so much, you've studied so much, तो तुम घर पे क्यों बैठोगी? Yeah, and also खुद को भी boredom होने लग जाता है कि यार what should I do? What should I do? Correct. So although there were certain questions raised when I started working, but then he was there to support कि क्या करना है. एंड अल्टीमेटली आपकी चॉइस है, Yeah. लाइफ आपकी है. आज वो कुछ कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे. Correct. सो हम आज सुन के उस चीज को अपने दिल पे लगा लें, इमोशनली अटैच होके उस चीज पे सोचते रहें, विल कीप फाइटिंग दैट इमोशन अगेन एंड अगेन, दैट थॉट अगेन एंड अगेन कि ये मेरे बारे में ऐसे कह रहे थे. They have their own opinion because they come from a very different mindset. Your parents or in-laws, all of them will have a different mindset. Correct. आपका अलग है, तो इसलिए clash हो रहा है. You just need to understand that they're not wrong. Yeah. Because we are only blaming them that ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. ठीक है, आपको कौन सा कोई गन पॉइंट पे बोल रहा है कहीं नहीं जा सकते. Yeah. At least express yourself. हाँ हाँ, because these things will not make any difference after 5 years. 5 साल बाद आप काम पे जा रहे हो, वापस आ रहे हो, probably your mother-in-law will have a different view about you. Correct. अच्छा हुआ तुमने काम शुरू कर लिया. फिर अपने दूसरे फ्रेंड्स को मिलाएंगे, देखो मेरी बहू ऐसी है. हाँ, तो हम लोग बहुत ज्यादा उस सिचुएशन को लेके इतना सोचने लग जाते हैं कि बस उसी से फाइट करते रहते हैं. एंड मेरी तो एडवाइस यही है कि एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर नीड्स. क्यों जाना है, इट शुड बी क्लियर फॉर यू. तो जब वो एक्सप्रेशन आएगा तो आप अपना सपोर्ट सिस्टम खुद ही ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेंगे. कि आपको कम्युनिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मधुलिका है, राइट, शी इज हियरिंग आउट द वुमेन आउट देयर, सो आप उनको अप्रोच कीजिए, राइट. और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आदमी हो मर्द हो कोई भी हो, मेरे पास आइए, टेंशन मत लीजिए. वाइब्रेशंस का काम है, तो आप वाइब्रेशन सुधारेंगे और कुछ नहीं करना है, क्योंकि मास्टर करनी होती है अपनी वाइब्रेशंस. इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज होती है जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बिकॉज एंगर, आप लाइक रावण के जो 10 सर होते हैं वो सबके अंदर होते हैं, इवन इन वुमेन, वो सबके अंदर देवियों के जैसे रूप होते हैं, वैसे ही रावण के मेंस के अंदर होते हैं, कि सबके अंदर होते हैं. इट्स ऑल अबाउट कि कौन से सिचुएशन के अंदर कौन सा सर आपका बाहर आ जाएगा. You never know, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है. सो इट्स डेली माइंडफुलनेस विच वी नीड टू इनकलकेट, कि हाँ प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में जीना है. That's what will be our past as well, what we are living in present. It will be our future as well, what we would be living in that future. That would also be called as present. So we are creating everything in present. Like for example, we are doing this podcast recording, so we are creating this, right? And this is how life works. Like we need to act in a direction. That's all we need to do. Rest everything will get sorted. God will give you that light. ऐसा होता है ना कि अपन गाड़ी लेके निकलते हैं हाईवे पे, जहां तक लाइट जाती है वहीं तक ही देख पाते हैं. आगे जाओगे तभी तो दिखेगा आगे भी. True. Yes. So life is also like this. Okay, thank you so much for that. कि भाई रेजिलिएंट कैसे हुए, सेल्फ एक्सप्रेशन लेके आइए और अपना सपोर्ट सिस्टम फाइंड करना स्टार्ट करिए, और कम्युनिटीज ज्वाइन करिए. बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग हैं मार्केट के अंदर जिनकी इंटेंशंस अच्छी हैं. मधुलिका जी से कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात करिए. व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, अगर कोई भी चैलेंजेस आपको आते हैं लाइफ के अंदर, किसी भी करियर ट्रांजिशन से रिलेटेड, मदरहुड से रिलेटेड, so get in touch with people like her in the market, because it will give you that emotional freedom of expressing yourself. Right. Okay, the next question which like I would like to ask you, like what is the one piece of advice, Madhulika, which you would like to give someone who is actually feeling overwhelmed, right? They know everything, that what is emotional intelligence, everybody knows everything, right? They think that, even I think that I know everything, but I'm of a mindset too that I don't know anything. We are just a minuscule of this universe. Anything can happen to us, even while talking.
right? Anything can happen. So it's nothing is in our control. So what is that one piece of advice which you want to give people, for people like me who get overwhelmed? I would say like this. That's a direct question to me now. Okay. So what is that one piece of advice which you would like to give me if I'm feeling overwhelmed, like from my life's demand? I am a demanding person for my life. Like I want to create something Hmm. which can help many. It's not about me. It's not about my family. It's not about Jaipur. It's not about India. It's not. It's about the world. Like what we are doing, right? Hmm. In this on this planet, because I'm connected to nature. Right. I talk about five core elements. The nature. That's what is feeded into my mind since childhood, and that's how I came out in this journey too. Now I would like to know from you, people who are going through everything, right? They know everything, still they get overwhelmed because support की जरूरत सबको होती है, राइट? जैसे फॉर Hmm. एग्जांपल मुझे भी सपोर्ट की जरूरत होती है, आपको भी सपोर्ट की जरूरत होती है, हर Hmm. इंसान को सपोर्ट की जरूरत होती है. Hmm. But one thing which can help them always to gain that momentum in their lives, I would like to know from you. Because overwhelming to hoga, right? But Hmm. one tip which you can give. Very interesting question. Yeah. Thank you for asking, Nash. I think as a person like you who's very empathetic and emotionally intelligent, understands everything, फिर भी आप you have this mindset of a learning a student that I don't know much and I need to know acquire more knowledge and gain more wisdom. So we also have this habit of like people like you and me, we have this habit of analyzing things and observing things and are put into a certain lens. एक पर्सपेक्टिव्स के साथ हम उस चीज को देखते हैं Correct. और उसको ये सोचते हैं कि हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं. पर जब हम we also get overwhelmed. That's also an emotion that is coming up for you where you are feeling that I can do more. How can I do it? And there is a lot of stress too, Yeah. thinking of whether I'll get there, when will I get there. So many questions, they just jump into the mind. बहुत questions आ ही जाते हैं. तो मैंने मतलब I've also faced these things and not just with work, with other things also we face it. Overwhelming situations हो जाती हैं कई बार. Yeah. But then I've realized one thing is that this happens, this is just a state of mind. We uh, we just have to change the lens, पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा समझना है कि वो वहां पे ऐसे क्या हम स्ट्रेस किस लिए ले रहे हैं, Mm. इम्पोर्टेंस क्या है उसकी अभी. एंड जब वो समझ आता है कि हाँ द लार्जर पिक्चर क्या है. ओवरवेलमिंग तब होते हैं व्हेन वी हैव अ वेरी शॉर्ट टनल विजन. Yeah. व्हेन वी लुक एट द लार्जर पिक्चर ऑफ लाइफ, यार अल्टीमेटली लाइफ गोल क्या है? दैट लर्निंग, दैट एक्सप्रेशन, do something, get somewhere, have a joyful life, larger picture. जब वो समझ आती है, you also realize that yes, this is just my mind playing games. Yeah. So for people like you and me who are aware, who can actually make that distinction, okay, yes, I can think in a different way also. So there's something beyond the mind. Yeah. So we can tame and train our mind in a way Yeah. to look at things. So वहाँ it's all about perspective shifting change our करना. perspectives basically Hmm. at that moment. Yeah. To make your human self feel better. Makes sense. What do you think? Perfectly, like I would say, perfectly summarized. It's all about shifting our mindset at that point in time. Whenever we are feeling that overwhelming situations, चाहे burnout हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, stress हो रहा हो, Yeah. it's a very good thing which you mentioned. Thank you so much for that. And even see, like you mentioned that I actually consider myself as a in the learning curve only. Always, I want to be in the learning curve only. Because I'm not coaching people, I'm guiding Mm. them. I'm just being the guide to them that you can do this, and because I have done this,
राइट? नॉट जस्ट बिकॉज विराट कोहली ने ये किया है, नॉट जस्ट बिकॉज सचिन तेंदुलकर ने किया है, सबने उनकी अपनी लाइफ जी है। उनको जब सहायता की जरूरत थी, उन्होंने अपने कोचेस, अपने गाइड्स हायर करे, उन्होंने अपने उनके पास गए, उन्होंने अपना काम कर लिया। तो आपको भी यही करना है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू, कि आप अपने राइट पीपल, राइट मेंटर्स को फाइंड करिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए उन लोगों की जैसे। राइट। बिकॉज फिर क्या है, इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं अपन, कि हाँ सीख लो और सीख लो और सीख लो और सीख लो। इट्स लर्निंग देन अप्लाइंग, लर्निंग अप्लाइंग, लर्निंग अप्लाइंग। अदरवाइज वो रोटेट हो रहा है, फिर वो फिर एकदम से एक वेब बन जाता है, और वो वेब पता नहीं, किसी को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है इसके अंदर, वो इंटेलिजेंस का पता नहीं क्या हो जाता है। नहीं, सही कह रहे हैं। अब वी लर्न एंड वी अप्लाई, अनलेस वी अप्लाई एक्सपीरियंस गेन नहीं होगा। एग्जैक्टली, एंड देन एक्सपीरियंस, नॉलेज नॉलेज से तो बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, थ्योरी वाली एग्जैक्टली, वो हो जाएगी कि थियोरेटिकल बुकिश लैंग्वेज आ जाएगी बस। करेक्ट। मतलब ये लर्निंग समथिंग फ्रॉम द बुक एंड यू आर टीचिंग पीपल, so I think we're just a like mediator then, right? When you're not applying that knowledge, then comes that the real results which you can transform like others life, because सबके अलग अलग results होंगे, आपको ये पता है। हाँ हाँ। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते, किसी को गारंटी नहीं कर सकते कि आपका रिजल्ट ऐसा ही निकलेगा। नो, दैट्स पर्सन्स कैपेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन देयर एक्शंस, कि जो वो ट्रू। एक्शंस लेंगे, जितनी इंटेंशन, जितनी इंटेंसिटी के साथ वो एक्शंस लेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो। ऑल राइट, सो लाइक वी आर एंड ऑफ द सेक्शन 1। हाउ यू फीलिंग? क्वाइट गुड गुड। काफी लंबा खींच दिया मैंने। नो नो, लंबी लंबी पता है इट हैपेंस। अभी मेरी एक और रिकॉर्डिंग थी, तो उसमें भी ऐसे ही था, हमने 1 घंटे का डिसाइड किया, 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग चली ओ है बाप वो। रे। I'll stop the recording. Okay, thank you so much, Madhulika. We actually completed our section 1, around 1 of this podcast, and like it was a beautiful interaction, knowing all the secrets. Actually, I would say कि क्या क्या अपन फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर फॉर गेनिंग दैट इमोशनल रेजिलियंस विद इन अस, जो अपने को आगे बढ़ाए लाइफ के अंदर। पीछे नहीं देखना है, आगे का देखना है। पीछे देखिए सिर्फ सीखने के लिए कि अपन ने क्या गलती करी है और उसको आगे कैसे लेके जाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। नाउ सेकेंड राउंड ऑफ दिस पॉडकास्ट इज related to you, and like what exactly you do in your life in rapid fire. I'll ask this ओके। in rapid fire, and there will be certain questions, no options, it's your choice that what answer you would want to give, but it will be short and simple, right? And what our audience can gain out of that, like whatever you are doing, you're evolving yourself on a daily basis, and you're guiding that to others too, right? So what our audience can get like from this rapid fire, so just direct that, short and sweet. We'll do this quickly, okay? Cool. Okay. Question number 1. What's your favorite go-to self-care activity? Favorite is going out for coffee with my friend. Wow. At least once a week. Okay. So so guys, please take care of this. अपने दोस्तों के साथ, जिसके साथ भी आपको जाना है, कॉफी पे जरूर जाइए. It will help you evolve yourself. Are you an early bird or a night owl? आप रात को, दिन में Early bird. कैसे? Early Early bird. bird. Okay. Yes. मतलब 4-5 बजे के अराउंड? हाँ, अपने आप ही नींद खुल जाती है। फिर कभी कभार डिस्टर्ब होता है पैटर्न, बट या मोस्टली 5 to 6 के बीच में। So what advice would you give to the audience, that early bird रहे या night owl रहे? या I've फिर been depends? both. I've been both. जब पढ़ती थी तो मैं रात रात भर पढ़ती थी, 5 बजे तक, फिर सोती थी। बट नाउ आई हैव डिस्कवर्ड दैट गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग इज ग्रेट। आपका दिन Yeah. बहुत अच्छा जाता है, एक डिफरेंट Correct. एनर्जी और वाइब होती है। Yeah, makes sense. So जल्दी उठिए, अपना ध्यान रखिए, और देखिए अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान आप रखना सीख जाएंगे जब आप जल्दी उठना स्टार्ट कर देंगे तो। I think that's the message which we want to give, right? Yeah. And see, corporate life के अंदर I think night shift चलती है, so उस वजह से भी थोड़ा सा रोटेशन चलता है, but it's okay. आप थोड़े टाइम बाद जाके शिफ्ट कर लीजिए, 10 साल 15 साल, उसके बाद जाके अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करिए और अपनी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाइए। Absolutely. फेवरेट बुक और पॉडकास्ट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट? अपना ही बोल दीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ।
favorite book, I would say, I really like this one, Love Prescription. Love The prescriptions. recently I've read it. It's a research about relationships, Okay. um, by John Gottman and Julie Gottman, husband Mm-hmm. wife. They've researched for 40 to 50 years, and they found very few and very simple things that could really help in any relationship. So that was one of my favorites, and काफी कुछ सिखाता है वो. So that's a good thing. And podcast Podcast, for personal development. Yeah. podcast. I like Ranveer Alabadia. Yeah. But yes, Very good. that's a good one. I mean, he's done great work. ओके सो गाइज रणवीर अलाहाबादिया जी को देखिए ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन वेरी हम्बल एंड जो वो इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर एज सिंस द एज ही स्टार्टेड इवन आई वाज वाचिंग हिम इवन आई यूज्ड टू वॉच हिम पहले भी और अभी भी देखता हूँ इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफस्टाइल नाउ बिकॉज ही इज गिवन दैट टू अस या क्योंकि वो मेरे से छोटे हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप छोटों से ही सीखते हो एक्चुअली में लाइफस्टाइल ग्रोथ के बारे में छोटों से ही सीखोगे क्योंकि उनके पास इवॉल्व वर्जन होता है एक एक्सपीरियंस ज्यादा होता है बड़ों का सीख तो किसी से भी सकते हैं, बड़ों से या भी, छोटों से भी. I mean, there's no scope for करेक्ट learning. करेक्ट मेक सेंस तो सीखिए सबसे सीखिए बच्चों से भी सीखिए बड़ों से भी सीखिए और अपने आसपास के वातावरण से भी सीखते रहिए वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स योर कोचिंग स्टाइल क्या कैसे मतलब किस तरीके से आप वन वर्ड के अंदर आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे अपनी कोचिंग स्टाइल को Very present. प्लेजेंट Present. प्रेजेंट ओके Presence कह सकते हैं, अगर one word है तो presence. ओके ओके सो आपको प्रेजेंस अगर फील करनी हो तो मधुलिका जी के पास जाइए और उनके कोचिंग एक्सपीरियंसेस एक्चुअली में देखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं व्हाट वुड यू प्रेफर मधुलिका जी जस्ट अ कॉस्मेटिक क्वेश्चन दैट टी और कॉफी Coffee. कॉफी ओके फेवरेट इंस्पिरेशनल कोट ऑफ योर्स Inspiration quote. Um, become an observer of your life. become an observer of your life and that's a beautiful summarized version of everything I think the universe which you're seeing out here it's a summarized version of everything you become an observer of things so let's see what comes next beach vacation or mountain retreat you're a life coach so I would like to know from this from this perspective Mountains. mountains yeah what's the last song you listened to on a repeat mode भजन सुना था या फिर गाना सुना था क्या सुना था आपने रिपीट मोड पे I think last song जो मैंने सुना है that is the चमकीला का गाना. I don't know पंजाबी में गा नहीं सकती. ओके But I heard वो it किसी on और पॉडकास्ट के अंदर अपन करेंगे एक सिंगिंग वाला उसके अंदर कर लेंगे singing पंजाबी. But yeah. आई सॉ अ मूवी उसके अंदर है ना वो प्लान वो आई थिंक कौन सी थी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी थी क्या थी मुझे नहीं पता उसके अंदर वो प्लैनेट्स के अंदर जाते हैं एंड मतलब अलग अलग प्लैनेट्स के अंदर जाते हैं तो वहां पे एक प्लैनेट था जहाँ पे वो उतरे और वहां पे सब गा के बात करते हैं इधर हाँ गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो लेटेस्ट आई थिंक मूवी आई थी इसकी. तो उसके अंदर वो गा के बात करता है इट वाज एन इंटरेस्टिंग व्यू एज वेल कि हाँ गा के कैसे बात करा जाता है लैंग्वेजेस तो हमें दी गई है कम्युनिकेट करने के लिए तो उसका उपयोग करते हैं और देखते हैं गाना बजाना भी जब होगा जब देखा जाएगा वो भी so favorite way to actually unwind your busy day क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल ऐसी होती है I know it gets overwhelming right बहुत सी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं nobody understands that pain actually right and we don't need to express that pain too because that's a pleasure for us right because that pain only pain can give you that like alignment with everything because you've realized that pain that emotion this is the reason why you can get that help give that help actually to others as well they don't get entered into those situations so what's that favorite way of yours to unwind your busy day a favorite way to unwind is definitely just
after the whole day is finished, just sit on your recliner, आराम से do Hmm. some deep breathing, and I think I distract my mind and watch TV. That is my favorite way to unwind. I think like half an hour of that, to just not use any of your body or mind and just be there. I think TV, I would not say is a bad thing also. Screen time हम सोचते हैं गलत है सोना नहीं देखना चाहिए इतना. But I feel that somewhere our minds are so overwhelmed and working constantly, going here and there, that we need to stop that also. And Yeah. TV does the trick. There, when you're watching TV, you don't apply your mind anywhere. You just mindlessly watching. Correct. So Correct. half an hour is good. Correct. Actually, you use the correct word, mindlessly watching that. Off, actually, that point in time. We're not learning anything from Exactly, Netflix or exactly. other Because they're series. living that story of theirs and they're acting there, and they're doing their part of their story. Uh, Yeah. if you're watching others, like it's for learning, Hmm. or either it's for entertainment. Right? Entertainment. Like Hmm. we need both for us, and I think TV is for entertainment, right? Entertainment. Yes. Like we need to consider certain things for the purpose which through which they were invented, right? Like Yeah. TV was invented for a purpose. Enjoy entertainment. Yes. Yeah, just So get connected. It was a communication medium, but just connected towards everything, whatever is happening around the world too. yeah. That's what even I recommend. Please don't stop watching TV. थोड़ा सा देखिए, अपना माइंड ऑफ करिए और उधर ऑन करिए और On. वापस उसको ऑफ करके अपना माइंड ऑन करिए. Yeah, comedy देख लीजिए. There's so many good Correct. stand-up comedies that we Yeah. have to see. तो आप uh, इतना मतलब it's not making fun of other people. They're actually talking reality. वो खुद का मजाक उड़ा रहे हैं एक्चुअली में, उनकी हाँ. जगह रख के अपने आप को. हाँ. दे आर नॉट गोइंग थ्रू ऑल दोस सिचुएशंस, बट वो होता है ना, मजाक खुद का इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि दे नो हाउ कॉमेडी वर्क्स. कॉमेडी दूसरे का मजाक नहीं होता है, कॉमेडी हमेशा अपना खुद से करते हैं. They're full in acceptance of themselves. तो उनको Yeah. अपने आप पे ऐसे कोई वो नहीं है कि डर नहीं लगता कुछ कहते हुए अपने आप के और बारे किसी ने कहा है कॉमेडी इज अ डैम सीरियस जॉब. अगर कोई कॉमेडी करता है ना, तो में. एक्चुअली में वो बहुत ही सीरियस टास्क है एक उसके लिए, क्योंकि वो हमेशा ही एक्सपेक्टेड रहेगा कि हाँ यार ये कॉमेडी करेगा, हंसाता रहे. ये हंसाता रहेगा सबको. तो हम्म. जैसे कपिल शर्मा जी है, अब वो मूवीज में जाना चाहते हैं, लेकिन लोग उनको किसी और रूप से देखते हैं कि वो देखना हंसाए चाहते हैं. बस, क्योंकि वो खुशी उनसे मिलती है, वो वाइब्रेशन उनसे मिलती है. द वे ही स्पीक्स, द वे ही टॉक्स टू पीपल, द वे ही कनेक्ट्स विद द ऑडियंस. True. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. योर फेवरेट हॉबी आउटसाइड ऑफ कोचिंग? Okay. My hobby is to bake. I bake a lot, and like cheesecakes. वैसे breads bake कर ली, but घर के लिए हाँ बहुत बनाती हूँ मैं. Bakery items and cooking different cuisines, not just Indian, all kinds. जो भी अच्छा लग रहा है वो I think मेरी हॉबी बन गई है एक. I think एक वुमेन के लिए ये हॉबी बन जाती है. See, if you're a foodie, you also want to eat good food. Yeah. And हर बाहर जाना is not so possible all the time. So आप Correct. घर पे इन्वेंट करो, कुछ करो. कोविड ने सबको बना ही दिया था. So I think it's one of my favorites now. Otherwise, sports, कोई भी चीज अगर मुझे टाइम मिले तो I will go and do something or the other. मेक सेंस. स्पोर्ट्स और ये जो आपने सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करी ना, क्योंकि जो भी अपन पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, एंड वही अपने को करना चाहिए, क्योंकि खुद का ध्यान रख पाएंगे तभी दूसरे का ध्यान रख पाएंगे, अपने आसपास का वातावरण का ध्यान रख पाएंगे, हर चीज का ध्यान रख पाएंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट. आई एम श्योर ऑडियंस जो आपको देख रही है, बिफोर दे एक्चुअली एनरोल फॉर एनी ऑफ योर कोचिंग सेशंस, वो जानना चाहेंगे आपके बारे में कि एज अ पर्सन हाउ यू टॉक टू पीपल. सो एटलीस्ट दिस विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड यू बेटर. वन पीस ऑफ एडवाइस विच यू वुड गिव टू योर यंगर सेल्फ, कि आप अपने यंगर सेल्फ को एक क्या एडवाइस देते अगर उस टाइम पे आप वो कर सकते जो आपको आज पता है. वन पीस ऑफ एडवाइस.
because a lot of people are watching this. um, Everybody relates to their own story only, right? Hmm. They understands everybody's emotion, but everybody's living their own story, right? Their own unique story. Like for Hmm. example, you are living your story, I am living my story, the people who are watching out here, they are living their own individual stories. So Hmm. how we can identify that this is actually a unique story of mine, yeah, and how we can get that consciousness in ourselves, that's what I want to know. That जब आप यंगर सेल्फ के अंदर अपने थे एंड अभी Hmm. आप जब सिचुएशन में हो, तो उसके अंदर एक एडवाइस, आप सिंगल एडवाइस क्या देना चाहेंगे अपने आप को, एंड फॉर द ऑडियंस टू? या डेफिनेटली अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर मैं यंगर सेल्फ को कोई एक एडवाइस देना चाहूँ, शॉर्ट एंड क्रिस्प वुड बी, मेक योर ओन चॉइस, लिसन टू योर सेल्फ। क्योंकि मैंने ये पाया कि मैं जब एट इन माई यंगर डेज मैं बहुत ज़्यादा लोगों की इन्फ्लुएंस होके या प्रेशर में आके डिसीजंस ले लेती थी। खुद का अवेयरनेस नहीं थी इतनी कि व्हाट आई वांट टू डू। एंड ऑल्सो अगर कुछ चाहती थी भी करना, पर एक्सप्रेशन नहीं था इतना। एक आप खुल के नहीं बोल सकते थे काफी चीजें। तो मैंने ये चीज पाई है कि एक्सप्रेस करना इज नॉट अबाउट assertiveness or dominance, करेक्ट। but simple polite communication makes the other person understands you well. या Yeah, I mean, I feel that हाँ, अगर मेरे पास वो चॉइस होती और मैं खुद समझती, तो डिफरेंट डिफरेंट और चीजें कर पाती जो मैं करना चाहती थी। No, makes sense, Madhulika, and I'm sure many of the individuals out there, people who are watching right now, you would resonate with this. And see, if you're talking right now, right, and if you're seeing us as audience too, there's a reason for that, right? Why we came in our life, why this podcast came in your life, why we are doing this stuff, right? To reach out to you folks only, right? And you हम्म। need to understand that it's just a helping hand, which like Madhulika is providing, myself is providing, and many other coaches are providing. But you need to take that choice. You need to make that choice, which Madhulika beautiful described, that one thing, one advice which shapes up everything. It's the choices and the decisions which we make. आई जस्ट लाइक टू ऐड Yeah, वन थिंग। ये भी है कि यार हम अभी ये बात सोच के कि यार मैं पहले ये एडवाइस दे देती, ऐसे yeah, कर लेती, तो दुखी नहीं होना है। correct. बिकॉज इफ यू डिड नॉट गो थ्रू दैट जर्नी, you will not stand here where you are today. Yeah, So acknowledge yourself yeah. for where you Embrace are. yourselves. Yeah, हाँ। So अच्छी जर्नी गई है, हमने अब सीख लिया। अब बहुत लंबी लाइफ है आगे, तब यूज कर लेंगे। मेक सेंस। और कोई भी लाइक मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि जैसे बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, राइट, उसको हम्म। पता होता है एक्चुअली में कि उसको क्या करना है, उसको क्या चाहिए। उसको जब दूध चाहिए होता है तब भी उसको पता होता हाँ। है। he can sense, she can sense everything, that the child can sense everything, हम्म। because that senses वो तो दे रखे हैं ना भगवान ने, वो तो क्या? सबको दे रखे हैं। जिनके हाँ। पास नहीं होते उनके बारे में सोचो, कि वी आर लकी, एटलीस्ट वी आर सेंसिंग एवरीथिंग। तो जब आपके पास ये सेंसेस की एक सेंस आ जाती है ना, सो यू बिकम अ बेटर डिसीजन टेकर इन 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 योर लाइफ, कि भाई आप अपनी लाइफ के अंदर डिसीजंस, क्योंकि सी जब भी अपने पास्ट के अंदर कुछ भी हुआ होगा, पास्ट एक्सपीरियंसेस के अंदर, वो अपने डिसीजन से ही हुआ है। हाँ। व्हाटएवर वी हैव डिसाइडेड, वही हुआ है उस टाइम पे, चाहे आपने मजबूरी में लिया हो, चाहे अपने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करके लिया हो, चाहे आपने किसी और को ब्लेम करके लिया हो, चाहे खुद को ब्लेम करके लिया हो, राइट? बट वो ये डिसीजन से ही शेप अप हो रही है अपनी डेस्टिनी। शेप अप हो रही है भाई। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, कि अपना डिसीजंस, अपने चॉइस रखिए। सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ सेक्शन 2, एंड यू डिड एक्चुअली वेल इन दिस सेक्शन, कि आपने थैंक यू। एक बहुत ही बढ़िया रैपिड फायर राउंड ही था ये। एंड आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स के अंदर एक बार
जरूर Thank लिखिए. you. Thank एंड you, Avinash. लेट Like एंड coffee with रीच आउट. Avinash. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मधुलिका. Now, coming to the final section of our podcast, which is related to you, Madhulika, Hmm. and like your journey, how you gained that emotional power to coach others, right? And through Hmm. your experiences, whatever challenges which you faced in your life. And see, because stories get attached to people, right? Like why you jumped into this particular lifestyle, like why Hmm. coaching, and why we are recording this podcast too, let's say for example, Hmm. and why we are doing this, what's the purpose behind that, what's the intention, that's what I want to know. I'll give you your entire time. It's your time. uh, it's your introductory video for your coaching journey, for your personal growth and for your professional growth, whatever you did in your life and whatever you want to do in your life, because we are recording this and I want this from heart, that one advice which will help everyone out there who is watching this video, because see, your journey is something which would actually get resonated with many of the women's out there, right? Hmm. But it will help the men's as well out there, right? Because we're talking about emotional resilience. मुझे ऐसा लगता है मेंस को ज्यादा जरूरत होती है. I'm telling my part, because as a man, Hmm. उनको लगता है कि वो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्रेशर लेते रहते हैं और किसी Yes. को बोलते नहीं, Hmm. राइट? एंड Yeah. नोबडी आस्क्स देम एज वेल, कि उनसे पूछता ही नहीं है कोई, राइट? कि आपकी लाइफ हाँ. के अंदर क्या चल रहा है, आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आप कैसे किस तरीके से, क्योंकि उनकी लाइफ अलग तरीके से शेप अप होती है बचपन से ही. Hmm. जैसे लड़कियों की शेप अप होती है, वैसे ही लड़कों की भी ऐसी शेप अप होती है. सो Hmm. इक्वालिटी कम्स कि दोनों जब अलाइन हो जाते हैं कि अपन किस तरीके से सोसाइटी को बेटर बना सकते हैं, राइट? सो आपका रोल इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, अभी जो भी आप बोलेंगे. और आई वुड लाइक टू नो कि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, अपनी वीकनेसेस को आप कैसे रेगुलेट करते हैं. वीकनेस सबके अंदर होती है, एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू like give this like give from your intentions to this world. That's what I want to know from you. Over to Thank you. you. आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव और इंटेंशन बहुत नोबल कॉज के लिए है. एंड मैं भी मानती हूँ कि हाँ, अगर एक इक्वालिटी रहे समझने में एक दूसरे को, तो आई थिंक बहुत इजी हो जाएगी चीजें. एंड वी विल हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बट देन एटलीस्ट फाउंडेशन लेवल पे हमारा ह्यूमन माइंड तो इवॉल्व हो रहा है. Yeah. धीरे धीरे पीपल आर अंडरस्टैंडिंग. इवन if I take myself, my own journey has been not, I mean, it's not that I would feel कि हाँ, कोई बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ traumas होते हैं, but मेरे साथ कोई ऐसा कोई trauma नहीं है. But yes, I have gone through a different experience of life where failed a lot of times, failed in not clearing exams, uh, where I used, and also see, I was a sports person in my Wow. school, and I could have been a great player, international. I was playing national and international, but back injury हो गई, so एक setback आ गया. बहुत अपने माइंड से रिलेटेड चीजें होती रही जिसमें I was not able to overcome a lot of things on my own. अब मुझे लगता है that if I had that support when I was a young person, sports person, I would probably have performed better or overcome my own doubts and injury. And अब जैसे we have so many facilities now, I feel that yes, I could have got something, but that didn't happen. Uh, but over the years, like I had to maintain a relationship, also study, clear exams, शादी, बच्चा, in-laws, parents, सबको संभालते हुए आप आगे बढ़ रहे हो. There's no set way of overcoming anything.
It's how you build yourself. How I've built myself is to understand my own self first. मुझे ऐसा लगता है that the more you understand yourself, your inner being, how you function as a person, your own behaviors, your triggers, how somewhere आप aware होते हो अपने बारे में, आपकी प्रॉब्लम्स जो फेस करते हो लाइफ में, you are able to deal with them better. At least you can deal with them in a manner that you will look for solutions rather than thinking that ये क्यों आई है. We're often concentrating and focusing on the why of Yeah. the problem instead what should be done. So we have to find solutions, and that's what we are doing in coaching. Yeah. In a way, we are trying to help the client to find a solution for his own mental peace. चाहे वो प्रोफेशनली कहीं कर रहे हो या रिलेशनशिप में कहीं पे भी उनको क्लैरिटी चाहिए. जो केओस है उसमें क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी आई थिंक एक बहुत एक जर्नी है हर एक इंसान की. अवेयरनेस की जर्नी है. आज आप कितने अवेयर हैं, मैं कितने अवेयर हूँ, देयर इज नो सर्टिफिकेशन टू दैट. ओनली यू नो एंड आई नो हाउ वी आर डीलिंग विद थिंग्स. बिकमिंग मोर इमोशनली इंटेलिजेंट इज ऑल्सो अ प्रोसेस. मेरे खुद के भी challenges रहे हैं. I was a person, very short tempered person. My only problem was that otherwise I had very good relations with. See, a person with anger has bad relationships. Yeah. But I had good relationships with people because people saw a different side of me too. However, I felt that ये जो anger और short temperedness है, इससे मेरे अपने आप पे भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है. I disrespect people for no reason, and somewhere my husband is also being feeling a weird, उसको respect नहीं मिलती शायद. I think he also feels that he felt that my anger is because I don't see his choices. आप सामने वाले को नहीं देखते हो जब आप बस अपने बारे में ही सोचते हो. तो आई थिंक मेरे लिए एंगर को ओवरकम करना सबसे बड़ा इशू था. एंड आई वाज जस्ट फाइंडिंग वेज. लोग कहते हैं गुस्सा छोड़ दो, गुस्सा छोड़ दो. कोई ये नहीं कहता कि करना कैसे. Correct. तो अब मैं सोचती थी यार कैसे होगा. चलो गुस्सा छोड़ तो सकते नहीं है वो तो आएगा ही आएगा. इमोशंस है. देन आई स्टार्टेड लर्निंग. मतलब अपने आप को अपस्किल करना है. अपने आप को अपस्किल करना मेरी लाइफ जर्नी यही रही है कि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ एक्सपेंशन हो माइंड का, कॉन्शियसनेस का, कि आप कुछ सीखो, अप्लाई करो लाइफ में, हेल्प करेगा आपको. सो एंगर मैनेज करने की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो वो स्टार्ट किया. सो कॉन्शियस एफर्ट, जैसे आप कह रहे थे ना, लर्निंग एंड अप्लाइंग. तो वो लर्निंग शुरू करी 2 साल पहले फॉर माई एंगर. बिकॉज उससे पहले मुझे नहीं पता था इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बनते हैं. थियोरी मैंने नहीं पढ़ी थी. आई वाज जस्ट एक्सपीरियंसिंग थिंग्स. एंड जितनी अवेयरनेस थी उस हिसाब से चल रही थी. मैं बुक्स में कुछ पढ़ लिया एंड दैट्स ऑल. या आप, बिकॉज मैं रेकी सीखी है, रेकी मास्टर हूँ, तो आई have learned, understood about what energy is, how it affects you and other people, and how we can facilitate energy and work for your own self. But understanding anger completely changed my life. Theory was very important for me because I wanted to change for my son. I felt that ये गुस्सा ऐसा नहीं चाहती कि वो मेरी तरह बन जाए. Correct. So I think lot of your choices also depend on how you want to be like. Right. तो मेरा एडवाइस आई थिंक सबके लिए यही है कि आप अपने आप पे ध्यान दो. सेल्फ लव would be understanding your emotions, be more empathetic,
Yeah. towards yourself also. Compassion, you know. I think compassion is uh, rarely seen with people these days. We don't have that acceptance for things. खुद की भी नहीं है. खुद की Correct. तो इग्नोर ही करते रहते हैं हम कि यार ये अच्छा नहीं है, या देखेंगे ही नहीं कि वो हाँ दिस हैबिट ऑफ माइन इज नॉट सो ग्रेट, and you'll feel proud about the fact that yes, I am like this, I am like that. So I think build that compassion. No, makes sense. Makes sense. So, how your journey has been into this? Like you have become so like from I can imagine from what exactly you are trying to say is that you experienced everything from your life, and I deeply resonate with that because even like everybody who is watching this would resonate with this because they are also going through that story, Hmm. right? Everybody has that anger issue. Yeah. Everyone out there has that anger inside them. It's all about how they're channelizing that anger into their emotions. Hmm. So like how productively we can utilize that anger, और how कभी कभी किसी ने सुना होगा ना कि हाँ यार उसको गुस्सा आया तो उसने ये कर दिखाया, हाँ. हाँ. राइट? सो कर दिखाना वो एंगर से ही हो रहा है, वो पुश जो इग्निशन मिलता है ना वो एंगर से ही मिल रहा है। आई एम श्योर क्योंकि आप ये रेजोनेट कर पा रहे हो बिकॉज आपने एक्सपीरियंस किया है। पीपल हु हैव फेस दिस इशू, they know the consequences, they know the harm it can do for our environment, for us, for our life, and for the lives around us. So we know the harm it can actually does, right? This is the reason why you came up like this, right? Strong individual, you were already strong. It's not like that you were not strong. It's like showcasing it to the world to that I'm here to serve, right? I can help others too. Yeah. Once I understood that this is so valuable, Yeah, and if I feel that अगर ये correct, सबको पता रहेगी अपने तो लिए भी easy हो life जाएगी ना, कितनी it's a अच्छी selfish हो reason जाएगी. also. correct, correct. Easier for us to conduct ourselves, and understanding होगी तो you also realize that there will be a higher level of talks, conversations will change. Correct. आपकी कॉन्वर्सेशन बस एक लिमिट तक नहीं रहेगी जो हम जनरली लोग बातें करते हैं, स्मॉल टॉक्स या वैसे, बट कॉन्वर्सेशंस विल इवॉल्व. सो Correct. आई थिंक ह्यूमन रेस विल इवॉल्व. सो आपने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ के अंदर, मधुलिका जी। आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है। ऑलरेडी आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, राइट, इन योर जर्नी। आई एम श्योर बहुत कुछ अचीव कर चुके हो बिकॉज दिस इज द रीजन व्हाई यू सिटिंग एंड टॉकिंग दिस मच कॉन्फिडेंटली। अदरवाइज लोग बात ही नहीं कर पाते हैं, वो सेल्फ एक्सप्रेशन ही नहीं आ पाएगा जब तक आप अचीवमेंट नहीं होता है। अचीवमेंट का मतलब ट्रॉफीज और ये सब नहीं होता। अचीवमेंट का मतलब इंटरनल फुलफिलमेंट, कि आपने अपनी इनर पीस को कितना इंटरनल फुलफिलमेंट दिया है, एंड दैट शोज लाइक ऑन योर फेस बिकॉज आई कंसिडर like I actually check the vibrations, like what is the vibration. So you have that contentment in inside you, that you have that vibration which you're giving to the audience out here. Now what exactly is your take is on energy, because you are an energy facilitator too, right? You've worked on various projects in your life. With your experience, how you can, one piece of advice which you want to give to our audience out here, कि how we can shift our energies instantly, right? जैसे फॉर एग्जांपल गुस्सा आ रहा है, जैसे अपन गुस्से की बात कर रहे हैं, तो गुस्सा आ रहा है तो कैसे अपन इसको ओवरकम करें, राइट? सेल्फ डाउट आ रहा है एकदम से, क्योंकि सेल्फ डाउट आना, ये सारे इमोशंस वाजिब है, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ आवर जर्नी, बट हाउ डू वी ओवरकम ऑल दीज इमोशंस? एक स्ट्रेटेजिक प्लान अपन बना सकते हैं किस तरीके से? तो वो आप बताइए एक वन पीस ऑफ एडवाइस के रूप में, कि हाँ जो अपनी ऑडियंस फॉलो कर पाए इन चीजों को। बिल्कुल, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. मैं एनर्जी फील्ड में बहुत साल हो गए, मुझे 10-11 साल हो गए सीखे हुए. बट मैं जैसे आई डोंट प्रैक्टिस रेकी एनीमोर, because now I believe that there is these are alternative therapies जो आप यूज करते थे, to heal people, to help people, serve people. अब उसकी डेफिनेशंस चेंज हो गई हैं. आई थिंक सोसाइटी में हर कोई प्राणिक हीलिंग और रेकी सब कुछ कर रहे हैं.
एंड ने उसको एक बिजनेस बना दिया है. Somehow I feel that energy is something that everyone has, and you can regulate it on your own. Energy is with us, aura में है, every cell of our body, every part of it, smallest, सबसे छोटी से छोटी चीज is energy only. You understand vibrations. This Yeah. is where it's coming from. Correct. And there's this divine soul in us that is integrated into the human body. Yeah. Hmm. So there's an alignment between this body, divine, and mind. Mind is a very big aspect of the human body, which somewhere uh, draws a line between our consciousness and physical body. So हम अपने माइंड को एक्सपैंड कैसे करें? हमारा माइंड तब एक्सपैंड होगा जब हम काम होंगे या समझेंगे चीजें. Correct. एनर्जी अगर आप समझते हैं तो एनर्जी इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव. इट्स यू हु इज गिविंग दैट मीनिंग. Like if I say something bad or say something good, so one will become positive, the other one will become negative. Yeah. वही वाइब्रेशंस आगे जाएंगी. क्या इंटेंशन से मैं वो बोल रही हूँ, वो वाइब्रेशंस आगे जाएंगी. Correct. तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर एनर्जी में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है, तो यूज दैट एनर्जी दैट यू हैव टू क्रिएट व्हाट यू वांट. Wow. उसको आप वैसे मैनिफेस्टेशन कैसे होती है कि आप उस एनर्जी को यूज करो. व्हाट यू क्रिएटिंग, वो एनर्जी अपने आप काम करेगी. आपको नहीं देखना कि एनर्जी कैसे काम करती है. इट विल डू इट्स पार्ट. Correct. हमारी बॉडी में किस ऑर्गन में कहाँ से कौन सी ब्लड से कौन से कहाँ क्या जा रहा है हमें नहीं पता, बस Yeah. हो रहा है. और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी डूइंग ब्रीदिंग. वी आर ब्रीदिंग, ऑक्सीजन जा रहा है अंदर, अपने आप चल रहा है सिस्टम. Yeah. Breath has a very important lot of importance in regulating our mind and body. So आप कह रहे थे कि क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे हम ये अपने लाइफ में एनर्जी से रिलेटेड, Correct. how can it help us? Yeah. What I have done is मैं सोने से पहले जब मैं लेटती हूँ तो मैं आंख बंद करके बहुत डीप ब्रीदिंग ही करती हूँ. I would just watch my breath go in, inhale and exhale, Yeah. in and out. ऐसे करते करते अपने आप ब्रेथ नॉर्मल हो जाती है. आपको बस अपनी सांस पे ध्यान देके नॉर्मल करनी है. Yeah. And that is the time where you will be automatically connected to your inner being. Yeah. क्या है कि हमारी ये दुनिया में, फिजिकल बॉडी में, ह्यूमन माइंड लॉजिक लगता है हर चीज में. इट डज नॉट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिवाइन सेल्फ. Yeah. सो व्हेन यू कनेक्ट विद योर डिवाइन सेल्फ, अपने आप चीजें होने लग जाती हैं. यू विल बी गाइडेड बाय इट. देयर इज एन इंट्यूशन. जैसे इंट्यूशन इज समथिंग, इनर वॉइस इज समथिंग. व्हाट इज दैट? इट्स कमिंग फ्रॉम इनसाइड. Yeah. इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज इलॉजिकल. जब भी इंट्यूशन की बात आती है, कोई इनर वॉइस आती है, सो हम नहीं सुनते हैं उसको. मुझे इंट्यूशन, इनर वॉइस मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी बचपन से. मुझे बहुत सुनाई देता था कुछ 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 कुछ. मैं मानती नहीं थी एंड हमेशा देखती सुनती सोचती थी यार ये तो मुझे पहले आ गया था, सुन लिया था मैंने, बट मैंने किया क्यों नहीं. Yeah. किया क्यों नहीं. But later in life, I have developed this power of mind. Listen to myself more. So mind has started working like a antenna. Yeah. So it also connects with consciousness of other people. Yeah. So consciousness connect is something which is telepathy. जैसे आपको I'm sure idea होगा. Telepathy is something that you just know, communication through minds. And I have experienced certain things that has happened in my life. Conversations with my mentor. कि सोते सोते conversation हो गई. Morning में
ऐसा लग रहा है कि यार बात करिए, Yeah. सामने से मैसेज आ रहा है कंफर्म करने के लिए कि ये बात हुई है हमारी। तो ऐसा होता है, आई गेट कनेक्शंस फ्रॉम पीपल, what they really want from me. The next day they tell me what they want from me. So this I have developed because I'm connected to my divine soul. Yeah. और ये चीज बस डीप ब्रीदिंग से हो सकती है. So more you Correct. connected, you more fulfilled in life. You feel that सब मोह माया है, सब मोह माया है. कोई जो एग्जिस्टेंस रियलिटी है ना, वो आप जब रियलिटी में जीने लगते हो ना, तब आपको लगता है यार सब बढ़िया है, सब बढ़िया You है. use the actual words कि हाँ सब मोह माया है. एंड जो भी अपन काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं हम्म, टू हेल्प पीपल आउट हियर, राइट. क्योंकि हमें भी इस माया के अंदर नहीं पड़ना है, राइट. सी हमें सोशल मीडिया पे आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वी कैन रीच आउट टू मोर पीपल लाइक यू. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, सो obviously you have been connected to by the universe to us. We have been connected by the universe to us if you have found your inner soul. क्योंकि जब आप अपना इनर सोल फाइंड करते हैं ना, तो यू विल मीट पीपल who are matching your vibrations, who are yeah. matching your antennas, which you said. And like antennas ही है सब कुछ, right. It's all frequencies going in and out, in and out, in and out. एंड थ्रू आउट जो ये रेगुलेट कर लेता है द टेलीपैथी विच यू सेड कि हाँ अपन टेलीपैथेटिक भी हो जाते हैं. सबके अंदर ये इनर पावर होती है. It's about realizing that. It's all Yes. about self awareness. It's all about self acceptance. अप्रोच तो बाद में डिसाइड करना, पहले खुद को जानना सीखना जरूरी है कि व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर आवर वीकनेसेस. आपने एक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में मैंने एक क्वेश्चन जरूर पूछा था कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आप किस तरीके से मोल्ड करते हैं. स्ट्रेंथ्स को कैसे यूटिलाइज करना है और वीकनेसेस को अपन ओवरकम कैसे करें. ओके. हाँ, मैंने एक्चुअली सॉरी वीकनेस के बारे में जरूर बात करी थी, वो एंगर मैनेजमेंट के बारे करेक्ट. में. या स्ट्रेंथ्स को यूज मैं कैसे करती हूँ. मैं स्ट्रेंथ्स, मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, आई एम वेरी एम्पैथेटिक, ऑब्जर्वेंट एंड अवेयर, वेरी कॉन्शियस ऑफ थिंग्स. या तो जैसे कॉन्शियस आप रहते हैं ना, तो एन एम्पैथेटिक है. सो यू I what I do is I'm very much understanding what the person needs, what the environment needs, and cater to those needs also to mine, because आप ये मुझे ये भी समझ में आता है कि खुद का भी बहुत important है सब कुछ. Correct. Priority, you are also priority. My journey is also going on as a mother. I'm not just a mother, I'm not just a wife, I'm myself. या So as a person, my strengths are these. I think to be consistent, whatever I'm doing, करते रहो. You know, small baby steps, and that is, I think, helping me in the coaching business also and in my life. या कि मैं ये इस बात का स्ट्रेस नहीं लेती. I am organized, but I don't take stress कि अच्छा यार ये timeline से नहीं हुआ का. Oh God. I will not take stress. I will be like, ठीक है, ये नहीं हुआ. Maybe it was not supposed to happen right now. या Not because I'm lazy, but I think trust it the will divine align timing. later. It will align later. So Yeah. I think I have so much trust in the process कि I'm like, okay, सब बढ़िया चल रहा है. This is the reason this podcast is named as Trust Your Journey. कि आपको अपनी ट्रस्ट Yes. करनी चाहिए आपकी जर्नी. एंड उसी से जब आप अपने ऊपर विश्वास रखे हैं, आप अपना पास्ट खंगाल के जब देखेंगे ना, जब भी आप अपने पास्ट के अंदर डिग आउट करेंगे, तो आप यही देखेंगे कि जब जब आपके ऊपर चैलेंजेस आए हैं, आपके पास सॉल्यूशंस भी थे उसको ओवरकम करने के. हाँ, true. पीपल टॉक अबाउट चैलेंजेस. मैं बोलता हूँ सोल्यूशन से आप भरे पड़े हो. आपकी हाँ, वाइब्रेशंस भरी पड़ी है सोल्यूशन से. बिकॉज आप अगर अभी मुझे सुन रहे हैं, इस टाइम पे सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, मधुली जी का इतना इंटरेस्टिंग स्टैंड पॉइंट है कि अपनी लाइफ को बेटर कैसे बनाए, क्योंकि इनकी लाइफ ऑलरेडी बेटर थी.
Hmm. राइट. इट्स ऑल अबाउट इवॉल्विंग इन योर लाइफस्टाइल. कि हाँ, उन्होंने अपनी लाइफ को और बेटर बनाया, और बेटर बनाया, और आज आपके यहाँ पे बैठे हैं, कल को कहीं और बैठेंगे, कल को कहीं मतलब सोच के देखो कि आपने अपनी पॉसिबिलिटीज कैसे बढ़ाई. एंड दिस इज व्हाट माय लाइफ स्टोरी इज, कि हम अपनी पॉसिबिलिटीज बढ़ाते हैं. आपके सामने आके भी हम लोग यहाँ पे कुछ हमें कुछ मिलता नहीं है इन Hmm. चीजों से. इट्स ऑल अबाउट कि हम सेल्फ एक्सप्रेशन जब हम करते हैं, सो इट Hmm. गिव्स अस एज वेल दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ, हमारे पास लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं जो इस Hmm. सोसाइटी के अंदर हैं, और दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग, दे आर बैलेंसिंग एवरीथिंग, Right. दे have found their inner peace, they are connected to their soul, they are connected to their vibrations. So ये सारी चीजें जब फील होती है, and Hmm. you'll gain that empowerment too in True. your life, and Hmm. that's how manifestations happens. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है. जब आप अपने इनर सोल को फाइंड करते हैं, और अगर Hmm. नहीं फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए, मधुलिका जी के कांटेक्ट कीजिए. Oh. इट्स अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट which we have recorded. Yeah. And with that, Madhulika ji, I would like to end this podcast from section standpoint. One last thing, because you failed a lot, right? And मेरा beautiful quote एक ही है, Hmm. थॉमस एडिसन का: I failed 10,000 times, but I know 10,000 ways now how Yeah. to succeed further, Yes. right? क्योंकि मैं लोगों को वो बता सकता हूँ Hmm. कि वो ये गलती नहीं करे, कि हमने जो 10,000 गलती कर चुके हैं, तो वो क्यों करना चाहते हो. इफ यू वॉचिंग दिस, हमसे यंगर हो या फिर हमसे बड़े भी हो, इट डज नॉट Hmm. मैटर. एक्सपीरियंसेस लाइफ के सबके अलग अलग होते हैं. लर्न फ्रॉम अच्छा, सबसे अच्छा लो. आई से दिस कि टेक द गुड फ्रॉम Hmm. एवरीवन एंड हील द रेस्ट. आपका सब Absolutely. कुछ अच्छा होगा बढ़िया है. उसके अंदर. सो I जब भी think. आप अपनी लाइफ के बारे में सोचे, तो एक पर्पसफुल लाइफ, या फिर मधुलिका जी का ये पॉडकास्ट सुनिए. इनके जो व्यूज हैं लाइफ के बारे में, क्योंकि इन्होंने सारी चीजों को बेटर किया है अपनी लाइफ के अंदर हमेशा. लाइक फॉर एग्जांपल, एंगर मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैपेंस. आपकी लाइफ के अंदर भी वही चीजें, वही स्टोरी चल रही होंगी. बट जब आपने इतनी सारी चीजों से, फेलियर से गुजरे हो, हाँ. आप एक स्पोर्ट्समैन भी हो, राइट, Hmm. आप एक स्टेबिलिटी और सेटबैक्स के साथ होके चले हो, कि आप स्टेबल भी हो, आपने सेटबैक्स भी झेले हैं, हमने सब कुछ झेला है. वन पीस ऑफ एडवाइस विच यू वुड लाइक टू गिव टू एवरीवन आउट देयर हु इज वाचिंग दिस, Hmm. right? And like which can help them overcome and become a better version of their selves, right? Don't Hmm. copy others, but become a better version of yourself. So Hmm. एक एडवाइस आप उनको क्या देना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस को? और उसके साथ आप एक मैसेज, छोटा सा मैसेज, कि अपने रिलेशनशिप कैसे सुधारे, अपने आसपास का वातावरण कैसे सुधारे, क्योंकि रिश्तों के अंदर जब कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो वो कड़वाहट बनने लग जाता है, right? And Hmm. I would like to know from you, because you are a relationship coach, and आप ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को बता रहे हैं. तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट्समैन होते हुए भी, सेटबैक्स लेते हुए भी, फेलियर्स इतने सारे झेलते हुए भी, how did you overcome all this? And like, you are so confident in your life right now. If I'm looking at you, you've given up everything to the universe now, right? It feels like that, like I've done my part, and now it's up to them, right, to decide. So what is Hmm. one piece of advice which you want to give to everyone? Okay. Great. Thank you, Avinash. ऐसा हुआ कि जब when I was a sports person, I was playing. Mm-hmm. Failures की बात करें तो when I used to do a double fault, Okay. my father used to clap from outside. And because he knew that my service was so great that सामने वाला कर ही नहीं पाएगा. But वो मेरी टेंशन, प्रेशर जो भी था as a child, उसकी वजह से डबल फॉल्ट होते थे. And then he used to. So I've seen that kind of behavior. I've seen failures in the sense I've lost matches that I could win. I've seen failure in not clearing exams. But from those clapping of my father, from my failures where I did not clear my exam, I treated them as opportunities. वो क्लैपिंग की वजह से मुझ में वो पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस आया कि मैंने वो मैच जीत लिया. Hmm. And from a girl who was winning matches and people were stunned.
एंड फेलियर्स में अपॉर्चुनिटीज ट्रीट करती हूँ. Yeah. अपॉर्चुनिटी है सीखने की, लर्निंग की, कि आप अपने आप को बेहतर कैसे बने. एंड फेलियर्स इज नॉट टेलिंग यू दैट यू आर नॉट केपेबल. यू आर, you are capable, but it's not the time for you. Yeah. Or maybe you have to uh, there's something else in your life. आपको कुछ और experience करना है. So actually your destiny wants something else, something better for your life. Failure is just like that, a learning opportunity basically. It's a learning opportunity or journey है life. I'm not saying there's destiny. There's a will. There's Yeah. always a choice how you live your life. There is no destiny. There are probabilities. Correct. हमारी astrology पूरी इसी पे based है. But it's ultimately your choice how you want to go ahead in your life. Yeah. And वो choice और will तब आता है when you are very clear. Conscious is clear. आपको अपने बारे में you're aware. And you somewhere have this content and trust on yourself कि मैं कर लूंगी. ये ट्रस्ट है मुझे अपने आप पे कि मैं कुछ भी कर लूं. I can do manage myself in any situation. So the one piece of advice that I want to give for people on their relationships are that no matter what, in whatever stage of your relationship you are in, नए पुराने सालों की शादी हो गई, किसी भी स्टेज पर आप हो, start small, you know, छोटी छोटी ऐसी बातें ध्यान रखो, जैसे are you grateful, do you say thank you. हम पूरी दुनिया को थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन हम अपने पार्टनर को नहीं बोल पाते कई बार. पर स्मॉल लिटिल थिंग्स. Correct. और हमें कभी कभार आपको ये भी देखना चाहिए कि वेयर योर पार्टनर इज एंड पुट योरसेल्फ इन देयर शूज. You got to see, you know, their perspective also, because we keep on fighting that why do you do this, why do you do that. Accept नहीं करते हैं उनके behaviors, या criticize करते रहते हैं पूरे time. Criticize, and we use such language where we do not differentiate between the action and the person. Correct. सब उस चीज से रिलेट करने लग जाते हैं कि यार you're always like this, you're always like that. So don't use that word always. See that situation in that present moment. Yeah. Makes sense. Don't judge them or term them as someone, you know, कि तुम ऐसे ही रहोगे हमेशा, तो वो फिर वैसे ही रहेंगे जैसे आप क्रिएट कर रहे हो. Rightly said, Madhulika, that it's life is not about looking outside actually, right? It's all about looking inside first, and you beautifully summarized it with your experience that setbacks जब भी आते हैं तो failure आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है. They want you to become a better version of themselves, right? Of yourself, I would say. Or for myself too, for everyone, क्योंकि failure तो it's part of our lives, right? We will fail. थॉमस एडिसन का भी घर जल गया था ना, उनका कुछ वो पूरा प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई थी, उसके बाद भी he was like कि हाँ यार बना लेंगे at the age of 60-70. You can imagine how like सब कुछ आपने इन्वेंट कर लिया, सब कुछ ऐसा एकदम से तबाह हो जाए, फिर से आप ऐसे बोले तो लगता ही है ना. It's all about how sharp minds shifts their mindset in a particular situation with mindfulness. Yeah. So जो लोग भी ये देख रहे हैं तो अपने setbacks को, अपने failures को hindrance मत बनाइए. वो एक opportunity है आपके लिए. Find those opportunities in those failures and you will find your way,
right? And if you need a coach, how you can contact मधुलिका जी, अभी वो आपको खुद अपने वहां से बताएंगी अपने मुख से, और आप सुनिएगा कि आप उनको रीच आउट किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सी एज अ रिलेशनशिप कोच शी हैज दैट एक्सपर्टीज इन हर, एंड जब इंसान खुद झेल के निकला होता है सारी चीजों से, और जब वो दूसरों को बता रहा होता है, दे आर एम्पलीफाइंग, वो 10x कर रहे हैं उस चीज को, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. इट्स ऑल अबाउट व्हाट दे आर ट्राइंग टू गिव इन दिस सोसाइटी. सो जो लोग भी एम्ब्रेस करना चाहते हैं ये अपॉर्चुनिटी थी को, तो मधुलिका जी से कांटेक्ट कीजिए, और मधुलिका जी बताएंगी कि मधुलिका जी आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे. और बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट था, बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट, ऐसे ही इसी तरीके से ये चलते रहे और ऐसे ही दुनिया लोग एम्ब्रेस करते रहे. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कांटेक्ट करने के लिए लोग कहाँ से कैसे कांटेक्ट करें. दो आप डिस्क्रिप्शन में यहीं पे आप देख सकते हैं कि इनको कांटेक्ट कैसे करना है. स्टिल मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा. आई थिंक आप पॉज हो चुके हैं. All right, Madhulika ji, thank you so much for like inspiring everyone out there, because I'm sure इतना सब कुछ झेलने के बाद और इतनी अच्छी पर्सनालिटी आपने अब बना ली अपनी, तो लोगों को आप किस तरीके से अब हेल्प कर सकते हैं, जो अपनी ऑडियंस है यहाँ पे देख रही हैं, तो आप उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं उनके रिलेशनशिप इश्यूज के अंदर, बिकॉज एवरीबॉडी नीड्स पर्सनलाइज अटेंशन. सबको पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए. कोचिंग प्रोग्राम्स अपने पास बहुत सारे होते हैं, कोचिंग कोर्सेज बहुत सारे होते हैं. पीपल नीड टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन्स, उनकी कंफर्ट से उनको बाहर कैसे निकाले और गिव अप नहीं करे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर का कोई ट्रांजिशन हो, चाहे उसको मोल्ड किस तरीके से करना है, अपने इमोशंस को इंटेलिजेंस कैसे गेन करनी है. तो वट एवर सर्विसेज विच यू आर प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लोग आपको कैसे रीच आउट करें, और जो भी आप उसमें एंड में अपने हिसाब से जो भी आप एंड करना चाहें इस पॉडकास्ट को, इट्स अप टू यू. आई एम गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी टू एंड दिस पॉडकास्ट. Thank you so much, Avinash. It was such a lovely conversation we had, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. And you were सेम है. always हाँ, summarizing it and giving it a perfect direction to the conversation that क्यों हम कर रहे हैं और क्या वैल्यू लोगों को मिल रही है. और आई थिंक सेम हम लोग कोशिश कर रहे हैं एज कोचेस वो वैल्यू प्रोवाइड करने का लोगों को. कहाँ कहाँ वो स्टक है, कहाँ वो रुके हुए हैं. For me, my area is I help and support women in their relationships, their career breaks, motherhood. और मैं कैसे करती हूँ? देखिए, सबकी लगभग सेम इश्यूज हैं, सेम प्रॉब्लम्स हैं. Yeah. कई पैटर्न्स होते हैं, हाउ वी बिहेव, हाउ वी conduct ourselves. Those behaviors and patterns block us, create more doubts. वो हमारे अंदर fears पैदा कर देते हैं. And जितनी deep conditioning है, ये सब चीजें surface level पे दिखती हैं हमें. But जो problem है, the problem is deep rooted in us. So deep rooted की अगर आपको जड़ से उसको बाहर निकालना है, तो उसकी conversation चाहिए. Conversation किसके साथ करें? Yeah. तो कोच है आपके लिए, वो कॉन्वर्सेशन को आपको रिफ्लेक्ट कराने के लिए, आपको वो चीज दिखाने के लिए जहां पे आप एक्चुअली में स्टक हैं. भले ही आपकी लड़ाई आज आपके हस्बैंड के साथ हुई हो, बट उसका कॉज हस्बैंड नहीं है, उसका कॉज कहीं आप ही में छुपा हुआ है. वो क्यों हुई और कैसे हुई और क्या करना है अब. Wow. तो एज अ कोच आई हेल्प देम टू डिस्कवर दैट एरिया, एंड नॉट जस्ट रिलेशनशिप्स. कई चीजें ऐसी होती हैं कि वो स्किल या वो जो एनर्जी स्टक है, वो हमारे बिजनेस में भी कहीं ना कहीं कोई रुकावट लेके आती है. इम्पैक्ट आता ही है. एक्चुअली कोई भी डाउट या फियर होता है माइंड में, उसका इम्पैक्ट हर जगह होता है. रिलेशनशिप में, बिजनेस में, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. व्हाट यू आर इनसाइड इज रिफ्लेक्टेड आउटसाइड. So we help you to navigate your life, understand yourself, discover you. Because once you discover yourself,
things automatically will fall in place outside. तो ये सर्विसेज है मेरी कि मैं मोस्टली ऑनलाइन वन ऑन वन कोचिंग करती हूँ. एंड वन ऑन वन ही अच्छा लगता है मुझे, बिकॉज एक्चुअली में लोगों से बात करना, Yeah. उनको वैल्यू क्रिएट करना. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स वी डू कोर्सेज ऑनलाइन, बट हमारे पे उतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना आना चाहिए. Yeah. I have few courses for women, especially mothers and women in career transition. उनके लिए जो कोर्स है वो उनको सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ अवेयरनेस के लिए वो प्रोग्राम है. और मैंने अभी रिसेंटली एक हैंडबुक कंप्लीट करी है, जस्ट गॉट दैट प्रिंटेड, ओनली फॉर एक्सपेक्टिंग एंड न्यू मदर्स, द एक्सपीरियंसेस दे कैन. आई हैव अ स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वेलबींग एक्सपीरियंस जो है मेरा, वो मैंने आगे लेके आई हूँ लोगों को, लोगों के साथ शेयर करने के लिए. तो द फीडबैक आई गॉट इज ग्रेट. एंड इफ यू वांट दैट बुक, प्लीज डीएम मी. मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, कोच मधुलिका शर्मा. यू कैन आस्क फॉर इट. इट्स अ फ्री कॉपी. I'll send you the PDF. अभी बुक बुक इज इन लाइन. मैं लिखूंगी जब जैसे जैसे मुझे आज टाइम मिलेगा, बिकॉज हैंडलिंग सो मेनी थिंग्स यू गेट लेस टाइम फॉर योर सेल्फ. तो हाँ, इट्स इन लाइन. आई हैव रिटन दिस मच. तो मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला है कि मैं बुक भी लिख लूँ. एंड एक नया कोर्स है जिसपे मैं काम कर रही हूँ फॉर कपल्स, स्पेशली फॉर कपल्स. Okay. This is a 3-4 days course where you will learn few hacks, not hacks, but understand the relationship better. Yeah. Each other, क्या क्या आप चीजें कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, जिससे आपके रिलेशनशिप बेटर होगा. Yeah. Whatever situation you are in, you can apply those principles. They are universal. And it's a great way to start your relationship also. Like if you're getting married, अगर आप वो कोर्स करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप किस चीज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े. And if you're already married, then apply those to make your life more better Wow. and fulfilled. Yes. Okay. So Great. you can reach me on my website madhulikasharma.in. Yeah. And Instagram, or my email ID is madhulikasharma06@gmail.com. फोन नंबर मेरा Don't give. इंस्टाग्राम पे है. नहीं दे रही मैं फोन नंबर. Okay. So email और जो भी डिटेल्स हैं विल प्रोवाइड इट इन द डिस्क्रिप्शन टू. जैसे भी लिंक्स होंगे, जो भी आपके पीडीएफ आपने ई बुक हैंडबुक बनाई है, हाँ, एंड I'll आपके जो send that to you. स्पिरिचुअल विजडम उसके अंदर आई होगी, इमोशनल विजडम जो उसके अंदर आई होगी, बिकॉज पीपल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, राइट. वरना इन्फॉर्मेशन तो आप गूगल कर लो ना, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन ही चाहिए हो तो. यू वांट हाँ. रिजल्ट्स, then take that PDF, download that PDF, like whatever access you are given by Madhulika ji, and उनकी वेबसाइट पे जाइए, देखिए क्या क्या सर्विसेज हैं और क्या क्या आप उनके बारे में जानना चाहते हैं. उनको रीच आउट करिए. अगर आप कोई शी इज अ लॉयर एज वेल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रोफेशन. एंड लॉयर का काम होता है चीजें आगे बढ़ाना, राइट. डोंट गेट स्टक समवेयर और एनीवेयर इन योर लाइफ. तो रिलेशनशिप अगर आपको अच्छे करने हैं अपने, तो कांटेक्ट कीजिए मधुलिका जी को, और अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर. मधुलिका जी के साथ हम फिर से एक और पॉडकास्ट जरूर रिकॉर्ड करेंगे और एक नए एपिसोड के अंदर जरूर लेके आएंगे. बट जब तक इस पॉडकास्ट को अपन देखिए, और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज, अपने रिलेटिव्स सबको शेयर कीजिए, और अपने रिलेशनशिप कैसे सुधारने, ऐसे ही आप ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे, पॉजिटिव चीज़ें शेयर करेंगे लोगों के साथ, तो आपके रिलेशंस ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस आपकी अच्छी होती जाएंगी. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Avinash Sharma signing off from this side, and thank you Madhulika ji for giving us this much time, because it matters, right. For me time is everything, right. For you time is everything. This is the reason why we are connecting, and Yeah. for everyone who is shaping their journeys, please, time is everything. Make sure that you utilize your time wisely, and spend your time actually with
the people who are actually or there in on your screen, which is Madhulika ji. Please contact them, and if you want to contact me, you know the description, and there are the links, and you can share it with anyone else as well. Whomsoever you love, just make sure that you spread that love, because we want that this video should reach out to as many folks as it can, to Hmm. improve healthier relationships, and to maintain that harmony, to find that inner peace in oneself, in all those transitions which we all go through each day, each second of our lives. Take care of yourselves, keep breathing, and keep meditating with life. Avinash Sharma signing off. Thank you, Madhulika ji, for everything. Thank you, Avinash. Take care.